Sure, please. Okay, Santosh. Yeah, very good morning to all present here who have joined online for this one-day online training program and capacity building program for biomass pellets co-firing in thermal power plants for thermal power plant officials, conducted by National Power Training Institute, Southern Region, Neyveli, Tamilnadu. Myself, Senthil Kumar, Deputy Director and the Program Director, takes immense pleasure in welcoming you all for this particular training program. It's a very special program organized by NPTI in the aegis of Biomass Mission, SAMARTH Biomass Mission under Ministry of Power, Government of India. Briefing about the program. In order to address the issue of air pollution due to farm stubble burning and to reduce carbon footprints of thermal power generation, Ministry of Power has decided to set up a national mission on use of biomass in coal-based thermal power plants. This would further support the energy transition in the country and our targets to move towards cleaner energy sources. The national mission on use of biomass in thermal power plants has got an objective to increase the level of co-firing from the present 5% to higher levels, to take up R&D activities in boiler design to handle high amount of silica, alkalis in biomass, and to facilitate pellets, procurement strategy, and safe co-firing and policies and regulations on co-firing. This biomass co-firing in thermal plants is an emerging and number of power plants, more than 70 power plants in pan-India have already doing this co-firing, and as a promising solution to reduce dependence on fossil fuel while supporting the environmental conservation as well as national energy transition goals. So this training program has been thoughtfully designed to provide participants with practical insight, technical knowledge, policy perspectives, and operational challenges related to biomass pellet utilization, particularly in mill system in thermal power plants. We are fortunate to have eminent experts and experienced professionals who will share their valuable knowledge and real-time experiences with us during this session. I take this opportunity to express my gratitude to our resource personnel who has kindly consented to share their expertise despite their busy schedule. I also extend a warm welcome to all the participants. So we can see the list starting from the head of thermal power plant and in pan-India basis, and to various levels from DGM, general manager, and so on. Even GET is also joined, and also educational institutes, research scholars are also participated, which shows keen interest in upgrading their knowledge in this important area. I'm confident that today's deliberations will be informative, interactive, and enriching, and will enable us to gain a better understanding of technical, environmental, and economic aspects of biomass pellet co-firing. Once again, I welcome you all and wish this program a grand success. Thank you. Thank you, madam. Thank you for your welcoming address. Now it's time to invite our Honorable Director, NPTI Corporate Office, and NPTI member of SAMARTH Mission, Shri Surendra Kumar sir, for addressing this online meeting. Yes. Okay. Thank you, Senthilji. So very good morning to all of you. Respected Sri Hemant Jain, Director General NPTI, member CA, Grid Operation and Distribution. Respected Sri R.P. Agrawalji, General Manager NTPC and Mission Director, SAMARTH. Dr. S. Salomji, Principal Director NPTI. Madam S. Amrithavaliji, Director and HUI NPTI Neyveli. Sri Manoj Kumar Yadavji, Member Mission SAMARTH. Esteemed members of the organizing team, NPTI Neyveli, respected faculty members, dear participants of the program, and all present on this occasion. A very warm welcome to all of you to this online training program on biomass pellet co-firing in thermal power plants under SAMARTH mission. Friends, so India's power sector is at very important crossroad.
While coal-based thermal power plants continue to remain the backbone of our electricity generation, there is an equally strong national commitment towards cleaner, sustainable, and environmental-friendly energy practices. In this context, biomass co-firing in coal-based power plant has emerged as a practical and immediate implementable solution. The mission SAMARTH, launched by the Government Ministry of Power, Government of India, is a landmark initiative aimed at promoting the use of biomass pellet in thermal power plants. The mission addresses multiple national objectives: reduction in stubble burning, mitigation of air pollution, lowering of carbon emissions, reduction in imported fossil fuel dependency, and generation of additional income to the farmers. Under Mission SAMARTH, thermal power plants are encouraged to achieve biomass co-firing levels up to 5 to 10% depending on pellet design and operating conditions. This is not merely a policy directive, but a technical, achievable, and operationally manageable transition, provided plant engineers are well trained and prepared for this co-firing. This is precisely where NPTI's role becomes crucial. As the Apex National Training Institute, having 11 institutes all over the country on pan-India basis, we are serving for the power sector. NPTI has been the responsibility of capacity building, skill development, and knowledge dissemination for engineers, operators, and decision makers. Through these programs like this, NPTI acts as a bridge between policy intent and field level implementation. This program has been designed keeping in mind with the practical challenges faced by operating engineers. Biomass co-firing is not just about feeding a different fuel into the boiler. It impacts the entire power plant operation, including fuel handling and storage system, milling and feeding arrangements, combustion characteristics and flame stability, boiler efficiency and heat rate, slagging, falling, ash behavior, emissions profile, operation and maintenance practices, issues such as moisture content of biomass, calorific value, grindability, safety concerns like fire hazards, and blending ratios must be clearly understood by plant engineers. Safe, reliable, and efficient co-firing requires proper SOPs, close monitoring of operating parameters, and a well-trained operating team. We encourage all the participants to make the best use of this program by actively interacting with the faculty, sharing your operational experience, and raising plant-specific issues. Your feedback and field inputs are extremely valuable in refining our training modules and strengthening national implementation. Once again, I welcome you all to this program and wish you a highly interactive, informative, and a successful learning experience. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you very much for your valuable address, sir. It was eye-opening for all of us regarding the program, and hope that NPTI is going to contribute a lot for this particular initiative by the Government of India, Ministry of Power. So thank you, Surendra Kumar, sir, for joining. And it's time to invite our Mission Director, Shri Ravi Prakash Agarwal, General Manager of NTPC, and who is also the Mission Director of SAMARTH Mission, for delivering this keynote address. Sir, it's over to you, sir. Thank you, Senthil Kumarji. Most respected Director General NPTI, Dr. Sethu Selvam-ji, Director NPTI, Shri Surendra Kumarji, Director NPTI Southern Region, Madam S. Amrithavalli-ji, Shri Senthil Kumarji, and most significantly, the energy warriors of our nation, the thermal power plant officials participating today. Good morning to all of you. First of all, I welcome you all to this session, not merely as attendees of training program, but as the primary architects of India's energy transition. While the National Power Training Institute, NPTI, and the SAMARTH Mission have organized this platform, the actual execution responsibility of our national vision rests entirely on your shoulders. Friends, for years we have discussed climate change as a distant global challenge. Today, it is an operational reality. We are all aware of the journey that brought us here. From the Ministry of Power's initial policy in November 2017 to the formal launch of the SAMARTH Mission. SAMARTH Mission is basically an acronym
Sustainable Agrarian Mission on Use of Agro Residue in Thermal Power Plants that was formed in July 2021. Initially, like every baby, this endeavor also had its teething problems. But let us be clear now that the pilot phase is now over. We are no longer testing whether biomass co-firing is workable or not. We know it works. Is it possible to fire it safely? Yes, it is possible to fire it safely. There are certain issues, but still the percentage firing is quite at low level. So there are not many significant effects so far, as far as perception goes. Although there is a study which will be going on the effect of SAMARTH mission, it will take some time, the reports will take some time to come. But still it has been seen that this endeavor is a ground reality. It is not a NIST initiative and lying in files only. We are here to ensure that the 5 to 7% co-firing target is not just a compliance metric, but a standard operational procedure in every control room. Because our focus has shifted from sustainable, rather exploration to sustainable scale up. I'm proud to state that because of the relentless efforts of officials like you, SAMARTH is no longer just like I say thought only. It's a ground reality, and our latest data shows, the last one data shows that there is a significant progress. 71 thermal power plants across 15 states have successfully fired, rather integrated by this mission into their daily operations. They have successfully fired biomass, co-fired biomass along with coal. We have moved beyond theoretical pilots to utilizing over 37.19 lakh metric tons of biomass pellets across India. Most importantly, this collective effort has prevented approximately 44.63 lakh metric tons of CO2 reaching from mines to our atmosphere and thereby choking the living beings. So this is a significant achievement, I would say, and it has been all possible because of the relentless efforts of engineers and power plant officials like you. These numbers are just not statistics. They are proof that Indian engineers can adapt, innovate, and lead the world in decarbonization. Today, training is designed, today's session I'm talking about, it is designed to bridge the gap between intent and implementation. We know the challenges you will face, issues with pellet availability, supply chain reliability, or combustion technicalities. That is why this mission focuses on proven strategies. So those will be shared with you today, whatever people have experienced, and that will make you ready for further taking this mission ahead. Let us remember the scale of this opportunity. Biomass, it has been produced since decades, rather centuries, I would say, because India is principally agricultural country. But this was not being looked at as opportunity. India generates an annual surplus of over 230 million metric tons of agriculture residue. I am telling surplus. Why? As such, the whole biomass, other than the crop residue, which is the basic utilizing fruit, everything is a biomass. As such, around 752 million metric tons is generated, but it is utilized also in many things, in fodder and other byproducts also. But still 230 million metric tons is such which is not being utilized, and this huge quantity is lying as opportunity for all of us. The left out quantity is huge. For decades, this was burnt in the fields, blackening our skies. Today, we have the technology to turn that waste into the wealth. It's an opportunity for all of us, whosoever is in the whole chain, to have the better earnings also, as well as saving the atmosphere. This is cheap, local, carbon neutral fuel that strengthens our rural economy while powering our grid. Dear colleagues, you are not just running power plants, you are running the engines of India's growth. So agricultural residue is no longer a burden to be burned, it is a resource to be harvested
and utilized for cleaner power to retail. I urge you to use today's session to its fullest. Ask the hard questions, or rather hardest question you have about anything like challenges, precautions, effects, like slagging, fouling, or whatever you can imagine, and vendor management, because availability of pellets is also an issue. Share or operational bottlenecks which you are likely to face. All those who are involved in this area prior to you are here to solve your problems. They will be there to share their experiences and enrich you for preparing you to utilize the biomass in your plants also. Your technical expertise is the foundation of this mission. Let us leave here today not just with the better knowledge, but with a renewed resolve to make the SAMARTH mission a resounding victory for our mission. While going back, you must be confident that yes, we can do it, and we are committed in our heart of heart that we will do it. Thanks once again, and I will insist that please don't feel shy in asking any question, how simple or how obvious or how silly it may look, but clearing the doubt is most important instead of facing the situation and then learning from it. All are here. Whosoever is joining this workshop, I once again welcome them all, and thanks for giving me this opportunity. All the best to all of you. Thank you, sir. Thank you, Sri Ravi Prakash Agarwal, sir, General Manager of NTPC and Mission Director. So, sir, you have clearly informed us the mission's motive and how India has progressed in this area of biomass co-firing. So, it's very heartening to hear that 71 power plants in India have taken up this biomass co-firing. And as you rightly told, the gap between the intent and implementation is going to be bridged by conducting training programs like this. Actually, NPTI is associated with Biomass Mission for the past 5 years, since 2021. Neyveli has conducted 4 online training programs and 1 stakeholders training program. And Kerala has conducted 2 online training programs on this particular biomass co-firing. So we are committed to spread the message of this particular technology across the industry. And as you are rightly pointed out, the surplus biomass is an opportunity to tap, and it is also going to be helping us to harness the resource which is going to be available in plenty with us. So thanks a lot, sir, for your valuable address. It was a very insightful address. So it's an honor for all of us for your gracious presence. Thank you once again, sir. Thank you very much. Now it's time to invite our Honorable Principal Director, Dr. S. Selvam, Principal Director, NPTI Corporate Office, and Principal Director of NPTI Neyveli. Sir is also taking care of Neyveli. So we welcome our Principal Director, Dr. S. Selvam, to officially inaugurate this particular online biomass co-firing session. Welcome you, sir. Good morning, sir. Am I audible? Yes, sir. Respected 7th Gen member, grid operation and transmission, who happens to have some exigency to do. So he has gone out of station. So under his absence, I am taking this privilege. I welcome Mr. Ravi Prakash Agarwal साहब, GM NTPC Mission Director SAMARTH. सर शुरू से हम लोग इसमें लगे हुए हैं. We are with your guidance and we are happy to be the part, because this mission is whatever you say. So there are some initial budding issues or some other problems. It's a gain for the agro sector. That is very important. And there is a sustainability part also. So even though it is costly or that, whatever it is, we are happy to be a part of this mission. And I welcome Mr. Suvendra Kumarji, who is the coordinator of Smart Mission at NPTI. With his guidance, we have conducted so many programs here. Then Srimati Amritavalli ma'am, head of the director and head of the institute in Neyveli. She is also the coordinator since from the beginning, and this is the 4th program. Am I right, madam? They are conducting. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. And Manoj Kumar Yadav ji, mission member, who is actively participating. He is also taking a class session the next area. And I welcome Santal Kumar. He happens to be the coordinator for Kerala and Neyveli.
and continuously is having experience of conducting so many programs. I am very happy today, irrespective of so many conditions, more than 200 attendants have been registered, 224 I could see. Yes. Credit goes to Senthil. And I happen to see our colleagues also, Dr. Saravana Bhavan, who was a faculty here, assistant director here. He left NPTI. Other senior colleagues, and I could see some of the persons working in their plants also. I could see the video. So it's a good session, really. Recently, you might have seen that in Delhi, the API air quality index have increased to more than 500 ppm. This is a very serious condition. Any average human being can get into cough or any infection. So the reason is unexplained. People say it is because of stubble burning, so and so, whatever it is. We are responsible. As a human being, we are responsible. So the ultimate solution is the agri product is ignored often. A farmer has no other option of burning it or dumping it somewhere other. That is later on somehow burned. Now the solution NTPC has come out. Especially they have tried in Dadri and they have given a best solution that we can go up to 7 to 10% of co-firing. And they have already studied the conventional issues and how to carry out, what are the typical mechanism, transport mechanism, how it can be, at which mill level it will be mixed, all these things there. The total expert mechanism is with them, and we are very happy that their faculty will be sharing with us. The other places where I have seen, especially in Tamilnadu and other, even though there is a lot of scope for bio-waste thing, I happened to see the white paper. Tamil Nadu is having so much of this, but we are not able to somehow penetrate this idea of biomass firing, co-firing in thermal power plants. Maybe because of the we have not probably introduced the idea into the agricultures. Like the other program we have to conduct in South also, we have to inform to the farmers that look, this can be made as brigades, this can be made as pellets, and so they can also be a partner in this business. So the maximum co-firing is, even though in other countries it is tried 20%, 7 to 10%, even I would say 10% in a 210 megawatt power plant is 2 megawatt approximately, 10%. That is equivalent to 2 into 400, 500 tons of coal. 1,000 tons of coals are saved. That is the cost. Now we should not look into the cost of pellets because it is more. It is 12, sometimes it is cheaper, sometimes it is costlier. So dumping mechanism and other things are to be seen. Anyway, I welcome this smart machines initiative. They have made us that this is inevitable and it is good to environment. It is in a way utilizing the biomass energy, and it is giving sustainability with the partnership of agro sector. Now the agricultural man will not say that this power plant is polluting, and he is also becoming a partner of the fuel supply mechanism. So he can be also happy. So this thing in future, definitely it is going to play an important role, provided we are having the mechanism and we have to convince in all. That's what, so I request our mission director, sir, you kindly organize some program wherein this farmers in agro sector and the pellet manufacturers can be a part of the team, so that this idea is passed on in south, in some places. One time in Bangalore, near Bangalore, one time in Andhra Pradesh, sometimes in Tamil Nadu, near possibly near the power plant location, so that participation is good. So we can increase
And I am sure that this is one of the best missions, and NPTI is giving its full support. I invite all the participants, especially working in field, experts, and trainees from NPTI. It's a great opportunity because you always think of some where there is a sustainability, there is a equity to the people, especially of weaker sector, agricultural sector, whatever it is. So this has to be taken with special interest, and definitely you will pass on the ideas and your expert learning from this program. And I once again congratulate NPTI Neyveli for organizing this Steps Over to program. It's more than 225 participants. I am very happy to inaugurate this. Thank you very much. Thank you. Okay. Thanks a lot, sir. So I would like to just take 1 minute more, and I would like to certainly congratulate NPTI team for such a big gathering and participation. It is really an achievement, and it will be really helpful in carrying this mission to the all corners of southern region. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Sir, good morning. Senthil sir, am I audible? Sir, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Please come on. Yes, sir. Yeah, I'm very happy to be a part of this training program first, and also happy to propose vote of thanks for this one-day training program. And I start with our Director General. I thank our Director General NPTI. Unfortunately, he is unable to join with us today, but his blessings are always with us. And I thank our Principal Director, Dr. Selvam sir. He is currently sitting in Faridabad, but he is the real motivator for all the activities happening at Neyveli. I thank Madam Amritavalli, a Director, Head of the Institute at Neyveli. And still we remember she initiated this training program, as our Principal Director sir rightly pointed out. Under her leadership, she conducted more than five training programs under this SAMARTH mission, and covered more than 1,500 people all over India. And I thank Ravi Prakash Agarwal ji, General Manager NTPC, also the Mission Director. I thank our Director Faridabad Surendra Kumar ji, and he is SAMARTH Mission member of our institute. I thank the program coordinator. He put a lot of effort, and he covered almost all over India by advertising. And at this moment, I am also happy. We have received more than 300 nominations. At present, I could able to see 220 participants are participated in this training program. And I thank all the guest faculties, those who are going to contribute today's training program from various organizations. I thank first of all Sri Manoj Kumar Yadav sir, mission member, and Director Sanoda sir, the energy consultant from UK, and Sri Mohit Verma, Director from Biomass Energy in India from Rajasthan. And also I thank Ashish Kumar Dev, DGM, and Vivek Singh, Senior Manager, Operation Aparwa Thermal Power from Jajjar. Also I thank Sri Akila Senior Manager from Certified Energy Manager. Also I thank Subhash S. Kakar, GM retired from NTPC Dadri. But not least, I thank all the participants, those who are participating almost all over India, and with more than 300 participation over this training program. Once again, I thank you and all the best for all the participants. Okay. Thank you, Dr. Raja. First of all, apologies for there is a problem in my microphone, so I could not invite you. So thank you, Dr. Selvam sir, Principal Director, for your valuable inaugural address. So it was really a motivating speech for all of us sitting at Neyveli. You have been the constant support and motivation for all of us in organizing all these events. Thank you very much, sir. And once again, I thank our Mission Director, Shri Ravi Prakash Agarwal sir, for joining in spite of his busy schedule. And a special thanks goes to Shri Manoj Kumar Yadav, Mission Member of SAMARTH Mission.
and all my team members at NPTI Neyveli, Madam Amarthavali, Director, Head of the Institute, who has supported us for organizing this event very effectively at our institute. So I also thank all the participants who have joined here. Kindly be available back for the technical session by 11 o'clock. From 11 we start the technical session. We will have a small break for regrouping. So exactly at 11 o'clock we will start the technical session. Sir? We can start. I think there is no requirement of break. We can start. Yes. Yes, sir. Yes, sir. No issue, sir. Then it's my pleasure to invite Shri Manoj Kumar Yadav, mission member of SAMARTH mission, who will be detailing us about the various mission motives of SAMARTH mission and what is the initiative of all this program by Ministry of Government of India. I hand over to you, sir. Thank you. So PPT visible? Sir, you can maximize, sir. It's visible, just maximize it. Okay. Manoj Kumar, sir, can you go for full screen? It is the tile view. Is it visible now? Slides are visible, sir, but it is not in the full screen mode, sir. Hello. Yes, sir. You can remove that icon, sir, on the right side. You can drag it out. Drag it out. Sir, it is okay. Okay, sorry for the inconvenience. Good morning, everybody, and good morning to all the dignitaries, all my seniors, all the participants. So just before okay, so just before starting, I saw a message saying that इसको हिंदी में भी थोड़ा अगर आप रहे तो it would be more appropriate. एक message मैंने comment box में देखा. So we'll try to cover it in English as well as in Hindi so that we can optimize this opportunity to reach, communicate our message to everybody. So I am Manoj Yadav. I've been part of SAMARTH mission since last 1 year. And in my presentation, we'll just go through something about biomass co-firing, then availability of agro-residue, government initiatives, what is the present status and what are the major problems we are facing, the challenges which we have to overcome to increase this co-firing process, and the way forward, what we have planned or how we will tackle this. So we are aware that globally everyone is moving towards green energy.
And if you remember why we are moving towards this green energy, in 1896, around 1896, some scientists came up with this idea that due to usage of fossil fuels or increase in consumption of fossil fuels, what is happening is there is a change in climate. And say there were discussions around this, where after almost 100 years, there was this Kyoto Protocol agreement was signed among nations. Almost 193 nations have agreed to that, to reduce emissions so as to reduce the impact of climate change. So what is climate change? Even in all our sessions, we start with this because this is the foundation of biomass co-firing. So what is climate change? Now, when we emit greenhouse gases into the atmosphere, especially carbon dioxide, it increases the temperature of the environment. Now, to just give a perspective, if you go to pre-industrial era, say 1850 to 1900, the global average temperature was around 14 degrees Celsius. And if you refer to some documents, you will find that it has reached to 15.2 degrees Celsius. Now, from 14 to 15.2, that is, a very minuscule increase of 1.2 degrees Celsius. Then why we are so worked out? No? This question should arise. Why we are so worked up for just an increase of 1.2 degrees Celsius? See, the nature is very sensitive. When I'm talking about global average temperature, it has taken almost like giving you the health of globe. अगर आपको इसमें एक एग्जांपल के थ्रू समझना है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और वो 39 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो हमें सीवियर कंडीशन उसे डिक्लेयर कर दिया जाता है. तो उसी लॉजिक से, मतलब उसी लाइन में आप ये देख सकते हैं कि जब 2 डिग्री सेल्सियस अगर राइज हो जाता है टेम्परेचर, तो इट विल हैव अ वेरी हजार्डियस इम्पैक्ट ऑन द ग्लोब. उसमें बहुत इम्पैक्ट आएगा, क्लाइमेट चेंज होगा, देयर विल बी मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, सी लेवल राइज होंगे, आपका जो सीजन्स हैं वो इफेक्ट हो जाएंगे, क्रॉपिंग पैटर्न इफेक्ट हो जाएगा. तो ये प्रॉब्लम है. इसको एड्रेस करने के लिए समवेयर अराउंड दिसंबर 1997 एक क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ. वेरियस नेशंस एग्रीड टू दैट. फिर उसके बाद काफी सारी कंट्रीज ने एक्शंस लिए टू रिड्यूस एमिशन. फिर 2015 12 दिसंबर 2015 को पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ. इस पेरिस एग्रीमेंट में 190 नेशंस ने इसे रेटिफाई किया था, मतलब almost everybody was part of this. तो why I am stating this data? ये कहने का मतलब है कि बहुत लोगों को डाउट होता है कि ये क्लाइमेट चेंज सही भी है कि नहीं. मतलब काफी सारे फोरम में लोग मतलब आर नॉट कन्विंस्ड. लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि पिछले 100 साल से इसके ऊपर डिस्कशन हुआ, अलग अलग एजेंसीज ने इस पे काम किया, अलग अलग कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हुई, और लास्ट में जाके 2015 में कम से कम 190 या मान के चलिए ऑलमोस्ट एवरीबॉडी एग्रीड कि हाँ इस पे हमें एक्शन लेना चाहिए. और वहां से ये जर्नी स्टार्ट हुई कि हमें कैसे फॉसिल फ्यूल से मतलब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करना चाहिए. अगर आप इंडिया का भी देखोगे तो आपका ऑलमोस्ट 51% रिन्यूएबल एनर्जी का इंस्टॉल कैपेसिटी है. अगर इंडिया का टोटल जो इंस्टॉल कैपेसिटी 501 गीगावाट है, उसमें से 51% आपका रिन्यूएबल एनर्जी है, 49% आपका थर्मल है. थर्मल में भी 43% कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं. तो ये आपको दिख रहा होगा कि लास्ट 10 साल में इंडिया ने भी मूव किया है और वी हैव रिड्यूस्ड आवर कार्बन एमिशंस, और कोल डिपेंडेंसी पे भी हमारा रिडक्शन हुआ है. वी हैव इंक्रीज्ड आवर एनर्जी सिक्योरिटी. सो और हमें नेट जीरो एमिशंस जाना है 2070 तक. So how biomass is linked, biomass co-firing is linked to this thing. Biomass is a carbon neutral fuel. Biomass में भी कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है. When you burn biomass, कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होगा, but
जो क्रॉपिंग साइकिल होता है उसमें वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, कार्बन एब्जॉर्ब करता है, एंड while growing it absorbs carbon, and फिर जब आप उसे बर्न करते हो it is released. So it is different from burning coal. कोल में आप क्या कर रहे हो कि आप माइन से या जमीन से कोयला निकाले, कार्बन निकाल के जला रहे हो और उसे एमिट कर रहे हो एटमॉस्फेयर में. So इससे क्या हो रहा है, आप कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड और कहने का मतलब है ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में, जिससे कि टेम्परेचर राइज होगा. तो जब आप अगर कार्बन न्यूट्रल फ्यूल पे स्विच कर जाओगे तो आपकी ये जो एमिशन की जो ग्रीन हाउस गैस इंक्रीज का प्रॉब्लम है, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट. ठीक है. दूसरा क्या होता है कि एनर्जी सिक्योरिटी. एनर्जी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि क्या होता है हमारे पास जो कोल के रिसोर्सेज है, इनफैक्ट ग्लोबली भी जो कोल के रिसोर्सेज है ये 100 ईयर्स भी नहीं चलेंगे, मे बी 70-80 ईयर्स का इनका एस्टिमेट है जो अभी तक जो भी रिसोर्स मिले हैं उसके बेसिस पे. और द रेट ऑफ कंजम्पशन जो हम इंक्रीज करते हैं, जैसे इंडिया भी इंक्रीज करता है, जैसे लास्ट ईयर हमने कंज्यूम किया था 800 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ कोल. इस साल का एस्टिमेट है 906 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ कोल इन थर्मल पावर प्लांट. अगर आप ओवरऑल कोल देखोगे दूसरी इंडस्ट्री का मिला के तो 1200-1300 मिलियन मेट्रिक टन चला जाता है. तो मतलब वो ये कंजम्पशन अगर आप ये रेट ऑफ इंक्रीज तो रहेगा, क्योंकि वी आर ग्रोइंग, एवरीवन इज डूइंग प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी, तो पावर कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो आपने ये सब बढ़ना ही है. तो और कोल रिजर्व्स तो लिमिटेड है, तो मोटा मोटा ये है कि 70-80 साल का भी रिजर्व अवेलेबल नहीं है. तो हमारा क्या है कि इसीलिए हम स्विच कर रहे हैं. आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादा सोलर, हाइड्रो, विंड, गवर्नमेंट के भी पुश है इसमें. और थर्मल पावर प्लांट में भी कोफायरिंग जैसा कॉन्सेप्ट वी आर इंट्रोड्यूसिंग. इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि थोड़ा थोड़ा हम धीरे धीरे वी स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम कोल. तो इससे आपका एक ये होता है कि अगर कोल पे डिपेंडेंसी, क्योंकि हम इंपोर्ट भी करते हैं एज अ कंट्री, वी इंपोर्ट कोल. सो और बायोमास को हमें कोई इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं, हमारा सरप्लस, हम आगे देखेंगे, सरप्लस बायोमास अवेलेबल है हमारे पास. सो उसका अगर आप 20-40% भी 20% भी यूज कर लेंगे तो इट विल बी, जो हमारा टारगेट है वो अचीव हो जाएगा. और बायोमास का दूसरा नुकसान है जो जलाते हैं, उसको भी टैकल कर पाएंगे हम. और इस प्रोसेस में एक फार्मर्स के लिए और अदर स्टेक होल्डर्स के लिए एक इनकम जनरेशन का भी सोर्स है. सो दिस वाज द क्रक्स कि हम व्हाई वी आर मूविंग टुवर्ड्स बायोमास कोफायरिंग. फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई अगर बायोमास से ही कोल तो रिप्लेस करना, हम एक पूरा ही बायोमास का प्लांट लगा दे, व्हाई वी आर. तो एक है कि इंडिया का जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है दैट इज अराउंड 217 गीगावाट थर्मल पावर प्लांट, 17-18 गीगावाट का है. अब ये एक बहुत बड़ा इंफ्रा है, आप इसको ऐसे मतलब वो नहीं कर सकते. इसको और बनने में भी बहुत टाइम लगा, ओवर द पीरियड ऑफ मतलब 50-60 ईयर्स वी हैव ग्रोन. तो इसको आप इतना जल्दी रिप्लेस नहीं कर सकते. और एग्जिस्टिंग इंफ्रा है, उसमें कैपिटल इन्वेस्टेड है. और बेस लोड के लिए अगर आप ग्रिड ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेस लोड के लिए आपको थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो रिन्यूएबल है उनके कुछ चैलेंजेस हैं जिसको हम कैटर कर सकते हैं व्हाइल यूजिंग दिस थर्मल पावर प्लांट्स एंड हाइड्रो प्लांट्स. तो ये हमारी रिक्वायरमेंट तो है ही. तो हम 100% फायरिंग से अगर हम को फायरिंग करें तो को फायरिंग में हम एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं. 100% अगर पावर प्लांट लगाना है तो पहले तो उसका लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक पूरा नया से शुरू करना पड़ेगा, और इनका जो कंप्लीशन पीरियड होता है वो भी बहुत बड़ा होता है, तो बहुत टाइम लग जाएगा. मतलब एक इम्प्लीमेंट विल बी ए चैलेंज अगेन. ये एक हाई कॉस्ट ऑप्शन है क्योंकि आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, एफिशिएंसी भी लो रहती है, और उसमें एज डिस्पोजल के अलग चैलेंजेस हैं. और जबकि आप एग्जिस्टिंग थर्मल पावर प्लांट में यूज करोगे तो उसमें आप एक जो एमिशन है, एमिशन का प्रॉब्लम है, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन की जो हम बात कर रहे थे, वो आप कैटर कर पाओगे. जो हम बात कर रहे थे, जस्ट टू गिव अ आइडिया कि क्या इंडिया का बायोमास का जो अवेलेबिलिटी है वो कितना है. तो अगर आप देखें तो ये 2019 का डेटा है. 230 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ सरप्लस बायोमास जनरेशन है. अभी हमने मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एक और स्टडी कराई है जिसमें इट इज स्टिल नॉर्थ ऑफ 200 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम जनरेशन है बायोमास सरप्लस का. तो सो कहने का मतलब ये है कि इट इज गुड इनफ. जो हमारा ऑब्जेक्टिव है को फायरिंग का, उसके लिए सफिशिएंट बायोमास अवेलेबल है. और अगर मान लीजिए ऑल इंडिया
पूरा इंडिया का जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है थर्मल पावर प्लांट का, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, दे स्टार्ट को फायरिंग एट 5%, तो उनको ऑलमोस्ट 40 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम जैसा लग जाएगा। तो विच इज मतलब वो 20% से भी कम है जो सरप्लस बायोमास अवेलेबल है। तो द पॉइंट इज कि मतलब रॉ मटेरियल का इशू नहीं है इस केस में, जो हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये जस्ट एक वो देने के लिए है आइडिया कि जब हम अगर मान लीजिए इंडिया को फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है 10% बायोमास में, तो अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं इसमें, जैसे फार्मर्स हो गए, पैलेट मैन्युफैक्चरर्स हो गए, थर्मल पावर प्लांट्स हो गए, सो हाउ मच इन टर्म्स ऑफ मनी, हाउ मच इज द मार्केट। सो एक ये जस्ट एक फ्यू नंबर्स हैं जिससे आपको एक फेयर आइडिया लग सकता है कि इट्स अ वेरी ह्यूज मार्केट। अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 55,000 करोड़ का मार्केट है ये सारा मिला के, फार्मर्स का है इसमें, पैलेट मैन्युफैक्चरर्स का है। और नेक्स्ट है ये जस्ट कि हम अगर मान लीजिए आज 5% को फायरिंग कर पाती है पूरे इंडिया के सारे थर्मल पावर प्लांट, तो 40 से 45 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम, 40 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम जैसा आपका कोल का सेविंग हो जाएगा। वैसे ही वो 80 चला जाएगा, 10 पे जाएंगे, और इट वुड बी प्रोरेटा बेसिस पे वो 20% अगर आपको फायरिंग करते हैं तो दैट वुड बी अ बिग नंबर। कहने का मतलब है कि अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर टेकिंग स्टेप्स, क्योंकि इसमें थोड़े चैलेंजेस भी है, तो उसको देखते हुए, उसको एड्रेस करते हुए हम धीरे धीरे इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। एक जैसे कि सर ने, एमडी सर ने कहा कि ओरिजिनल जो इसमें जो थर्मल पावर प्लांट, दे आर द हीरोज, ये उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। अगर वो उनका इंटेंट रहेगा, उनके एफर्ट्स रहेंगे, तो वी विल बी एबल टू रीच दिस। क्योंकि बेसिकली पॉलिसी गवर्नमेंट बना सकती है, बाकी सब चीजें हो सकती है, बट जो एग्जीक्यूशन टीम बैठी है, जो इंजीनियर्स वहां बैठे हुए हैं, जो वहां एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये पूरा उन पे डिपेंड करता है हाउ वेल दे आर एबल टू टेक अप दिस। बिकॉज अभी हम आगे देखेंगे कि ऑलरेडी जो एनसीआर के 11 पावर प्लांट्स हैं वो बहुत ही अच्छी कोफायरिंग कर रहे हैं। सो इनिशियली चैलेंजेस थे और दे हैव ओवरकम दिस चैलेंजेस एंड दे आर एबल टू कोफायर। जैसे लास्ट ईयर जो थे, जो जिन्होंने अच्छा कोफायरिंग किया था, लास्ट सेशन में हमने एलएनटी का भी एक सेशन रखा था। इस बार हमने अप्रवा झज्जर से रिक्वेस्ट किया था, वो भी है, आपको उनका एक देखने को मिलेगा कि हाउ दे आर एबल टू डू कोफायरिंग सो सक्सेसफुली टू सच एन एक्सटेंट। सो कहने का मतलब ये है कि एक एनसीआर में तो ये सक्सेसफुली हो चुका है। नाउ वी शुड सी कि हाउ efficiently we can implement it all over India. When I say efficiently, it means आपका जो भी इसमें इश्यूज आ रहे हैं, जैसे किसी को लग रहा है कि अरे इसमें एफिशिएंसी का प्रॉब्लम आएगा, कॉस्ट का भी इम्पैक्ट आ रहा है, तो इसी को हमें ऑप्टिमाइज करना है ताकि ये ऐसा हो जाए कि हम सही में कोल को रिप्लेस करें, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, देयर इज नो इम्पैक्ट. So this is what we expect from power plants, because they are the experts of running the operation of power plant. So उनको ये नया चीज इंट्रोड्यूस किया गया है, and based on their expertise, based on their experience, they can help to increase the co-firing. मतलब basically country को help कर सकते हैं to achieve the the commitments जो internationally किया हुआ है net zero emission का by 2070. अब हम आ जाते हैं पॉलिसी पे। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो मेरे बाकी प्रेजेंटर्स हैं, पॉलिसी मोस्टली मैं कवर कर लूंगा। इन केस आपको ऐसा लगता है कि ये रिपीट हो रही है आपके प्रेजेंटेशन में, तो आप उसको थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, है ना, सो दैट हम टू द पॉइंट बात करें और मतलब टाइम को ऑप्टिमाइज कर पाए। ठीक है, तो ये पॉलिसी अब जैसे कि इंटरनेशनली ये 20 साल पहले से स्टार्ट हो गया था। अगर आप यूरोप में देखें तो ऑलमोस्ट 25 इयर्स बोलेंगे, 2000 के अराउंड दे वर को-फायरिंग, बट दे वर नॉट को-फायरिंग बायोमास एग्जैक्टली, वो वुड पैलेट्स का ज्यादा वहां पर था। लेकिन अगर आप इज आउट इन द सेंस, अभी लास्ट ईयर ही यूके का जो लास्ट थर्मल पावर प्लांट था वो भी उन्होंने बंद कर दिया। तो कहने का मतलब है एवरीवन इज मूविंग टुवर्ड्स ग्रीनर एनर्जी। और
इंडिया और चाइना भी बायोमास पे है, जैसे जापान और साउथ कोरिया दे आर ऑल्सो डूइंग कोफायरिंग, बट उनका मोस्टली वुड पैलेट्स होते हैं कोफायरिंग मटेरियल। लेकिन इंडिया और चाइना है, इनके पास सरप्लस बायोमास रहता है। और अगर हम जो भी चैलेंजेस हैं अल्कली का और जो उसके और भी दूसरे एक दो प्रॉब्लम्स है क्लोरीन के, वो अगर हम एड्रेस करते हुए, अगर हम उसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़े, तो वी विल बी इन अ गुड पोजीशन, बिकॉज हमारे पास सरप्लस भी है और मतलब वी विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एमिशन एज वेल। सो इन इंडिया नवंबर 2017 में MOP हैज इशूड अ पॉलिसी कि ऑल थर्मल पावर प्लांट्स should try to co-fire 5 to 10% biomass in their plants. The objective was to initiate this activity, or based on feedback, further the policies were improved, modified, और दिसंबर या मार्च 2019 में NTPC दादरी ने सक्सेसफुली इसे कोफायर करके एंड मतलब ये कंक्लूजन निकल गया कि वी कैन कोफायर with Indian biomass. So 2019 में NTPC दादरी ने ये काम कर दिया था, कमर्शियली वायबल भी सोल्यूशन है ये इन्होंने प्रूव कर दिया था। और बेस्ड ऑन दैट द गवर्नमेंट हैज मूव्ड कि जुलाई 2021 में मिशन एस्टेब्लिश किया गया था, और फिर बायोमास पॉलिसी को भी रिवाइज किया गया अक्टूबर 2021 में। ये सारा ना जो स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, पैलेट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनके उन इनपुट के बेसिस पे जो भी इंप्रूवमेंट्स हैं उनको इनकॉर्पोरेट करने के लिए पॉलिसी रिवाइज की जाती है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि अक्टूबर 2021 में जो पॉलिसी आई थी 5 to 7% बायोमास पैलेट्स को फायरिंग थर्मल पावर प्लांट में करना था। फिर कुछ और इनपुट्स आए, तो मई 23 में बायोमास बैम्बू को भी इंट्रोड्यूस किया गया, bamboo and its byproduct for biomass pellets। और जून 2023 में फिर एक रिवाइज पॉलिसी आई बेस्ड ऑन द फीडबैक ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स, इसको 5% कोफायरिंग टारगेट रखेंगे फाइनेंशियल ईयर 24-25 को, और 7% 25-26 को। और एज ऑन डेट जो लास्ट 7 नवंबर 2025 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया है, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है जो 25-26 ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल है। और उसमें ये रिक्वायरमेंट है कि जो NCR के प्लांट्स हैं उनको 5% बायोमास पैलेट्स कंज्यूम करने हैं, कोफायर करने हैं, और 2% जो एडिशनल वेट है वो कैन बी सोर्स फ्रॉम बायोमास पैलेट्स, और इफ अवेलेबल टॉरिफाइड चारकोल मेड फ्रॉम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। और जो अदर रीजन्स में है, नॉन NCR रीजन्स में है, उनको 5% जो बायोमास यूज करना है, 5% को फायरिंग करनी है, दे कैन, मतलब जो अवेलेबल है, अगर बायोमास पैलेट अवेलेबल है तो दे कैन गो विद बायोमास पैलेट, और इफ टॉरिफाइड चारकोल मेड फ्रॉम MSW अवेलेबल है तो दे कैन गो विद दैट। सो अवेलेबिलिटी पे उनको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है। बट NCR में क्योंकि CAQ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट अभी वो है डायरेक्शन है, CAQM का डायरेक्शन है कि आपको 5% को फायर करना है, तो NCR में तो वो फॉलो करना ही है, बट नॉन NCR रीजन बाकी में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। सो दिस वाज द ऑब्जेक्टिव वाज कि जो एक हमारा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट निकलता है उसको भी हम जो हम ये आप कूड़े के पहाड़ देखते होंगे, यहाँ गाजियाबाद साइड जाएंगे या और भी NCR में भी आपको दिख जाएंगे, तो टू टेक केयर ऑफ सच थिंग्स कि ऐसे चीजों को अवॉइड किया जा सके, अगर उसको हम यहाँ यूज, तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मेक इट मोर ट्राइंग दिस पॉलिसी। द ऑब्जेक्टिव इज टू कि यूटिलाइज, इफ MSW अवेलेबल है तो आप यूज कर लीजिए, या बायोमास पैलेट है तो जैसी अवेलेबिलिटी। जस्ट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी को हम जस्ट एक बार देख लेंगे क्योंकि ये नई है, तो जस्ट वील गो थ्रू कि जैसे मैंने कहा NCR में आपको 5% बायोमास पैलेट्स को फायर करने हैं, प्लस जो 2% है यू कैन गो विद बायोमास पैलेट्स और टॉरिफाइड चारकोल फ्रॉम MSW। और अदर रीजन्स है वो आप 5% वेट बाय बायोमास पैलेट से जा सकते हैं, या अगर आप टॉरिफाइड चारकोल फ्रॉम MSW अवेलेबल है और OEM से आप कंसल्ट करके आपके TP थर्मल पावर प्लांट को अगर सूटेबल होता है तो यू कैन गो विद दैट। और जो फ्यूज आप को फायर कर सकते हैं वो है नॉन टॉरिफाइड, सेमी टॉरिफाइड और टॉरिफाइड बायोमास पैलेट्स।
सेमी टोरिफाइड का ये कॉन्सेप्ट था कि भाई सम ओईएम इज लाइक, जिनको ऐसा लगता है कि वो पावर प्लांट में नॉन टोरिफाइड नहीं जाते, तो उनके पास सेमी टोरिफाइड का भी ऑप्शन है, जिसमें आप टोरिफिकेशन करते हैं जिससे वीएम जो है 22 से 40% के बीच में रहे। सो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ पावर की तरफ से। और ये तो जैसे हमें पता है कि एनवायरमेंट कंपनसेशन रूल है एनसीआर में, अगर लास्ट ईयर था टू अप टू 3% देयर वाज नो पेनल्टी। अगर आप 3% जो 11 प्लांट्स हैं एनसीआर के 300 किलोमीटर रेडियस में, अगर वो 3% जैसा कोफायर कर पाते हैं तो उनके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं थी। और फिर प्रो रेटा बेसिस पे थी कि भाई अगर 3% से नीचे है तो 1 पैसा पर यूनिट, और 2 और 3 जैसे कि एक आप देख रहे हैं टेबल में। सिमिलरली 2025-26 में टारगेट इंक्रीज है, आपको 5% को फायर करना है, मोर देन 5% को फायर करना है अगर आपने पेनल्टी अवॉइड करनी है, एल्स देयर विल बी पेनल्टी। आप देख सकते हैं, आई थिंक ये टेबल विजिबल है आपको। तो अप टू 5 पैसा पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इफ यू आर नॉट एबल टू को फायर। तो डिपेंडिंग आप कितना को फायर कर पाते हैं। कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से तो क्लियर मैंडेट है एनसीआर में कि आपने को फायरिंग करनी है एटलीस्ट 5% फॉर दिस। अब और भी कुछ पॉलिसीज हैं जो बायोमास को फायरिंग को सपोर्ट करती हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने 2019 में ये स्टेट कर दिया। ग्लोबली तो ये रिकॉग्नाइज था, लेकिन क्योंकि इंडिया है तो लॉ ऑफ लैंड है, तो जो इंडिया का गवर्नमेंट कहेगा वो फॉलो करना है। तो उस हिसाब से 2019 में उन्होंने स्टेट कर दिया था कि जो को फायरिंग ऑफ बायोमास से आपका जो आरसी ने कैलकुलेशन भी डिफाइन कर दिया था कि हाउ यू कैन कैलकुलेट, अगर आप इतना जीसीवी का बायोमास लेंगे तो ये जो एनर्जी जनरेट होगी, तो हाउ इट विल बी इन यूनिट्स। सो वो भी एक अवेलेबल है, सीआरसी ने 2019 में किया था ये। सीओआरजी ऑब्लिगेशन हम जस्ट शॉर्ट में जाएंगे इसमें, क्योंकि ये दीज आर हेल्पिंग बायोमास को फायरिंग। हाउ, मतलब बायोमास को फायरिंग वी विल बी एबल टू अचीव दिस ऑब्लिगेशन। व्हाट इज आरसीओ? ये 27 सितंबर 2025 को नोटिफाई हुआ। रिन्यूएबल कंजम्पशन ऑब्लिगेशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसीज जो कहते हैं, कंज्यूमर्स है ना, पावर प्लांट वाले भी अपने पावर कंज्यूम करते हैं। तो जो कंज्यूमर्स हैं, इफ यू आर अ कंज्यूमर, देयर इज एन ऑब्लिगेशन टू कंज्यूम रिन्यूएबल एनर्जी। तो ऑब्जेक्टिव इज कि जब एनर्जी हम जनरेट कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी, तो उसका कोई टेक ऑफ होना चाहिए। तो उस इंटेंट के साथ ये पॉलिसी बनी है। तो अगर आप देखेंगे कि ये नोटिफिकेशन ये कहता है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2026 है, यानी 25-26 में टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कंजम्पशन ऑब्लिगेशन, एक जैसे मैंने 3 यूटिलिटीज की बात की, 3 स्टेक होल्डर्स की बात की, तो इन तीनों को, मतलब इनको 33% जैसा टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कंज्यूम करना है। और जिसमें से उसको डिफाइन किया गया है कि आपको हाइड्रो इतना करना है, विंड इतना करना है, 1%, 2%, इसका एक टेबल बना हुआ है। यू कैन गो थ्रू दिस नोटिफिकेशन डिटेल में, और उसमें आपको पता चल जाएगा। एक हमारे काम का है इसमें अदर रिन्यूएबल एनर्जी कंपोनेंट, जो 28% है, मतलब वो भी एक मेजर फैक्टर है। मान लीजिए मैं एक डिस्कॉम हूं, तो मुझे जो टोटल में 100, सिंप्लिसिटी के लिए बोलते हैं, ये 100 यूनिट्स में अगर कंज्यूम करता हूं, तो उसमें से मुझे 28 यूनिट्स रिन्यूएबल एनर्जी कंपोनेंट होना चाहिए। और अगर मैं नहीं कर पाता हूं, तो उसके लिए आइदर आई हैव टू परचेज रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स, और नहीं तो उसका एक पे आउट मैकेनिज्म भी है, और एक या फिर पेनल्टी, जो भी, मतलब यू हैव टू फॉलो दिस गाइडलाइन इन शॉर्ट। और ये जो रिन्यूएबल एनर्जी कंपोनेंट कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट है, ये 2030 तक 43% हो जाएगी ओवरऑल, जिसमें से 34% अदर रिन्यूएबल एनर्जी कंपोनेंट। ठीक है। और इसमें जैसे मैंने कहा, विंड, हाइड्रो, और जो इसमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस है टू प्रमोट
जो विंड और हाइड्रो प्लांट्स आए हैं 2023-24 में और उनका पावर कंज्यूम हो, ये इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने इसे पार्ट ऑफ नोटिफिकेशन रखा है कि आपको मतलब इनको डेडिकेटेड पावर दी हुई है कि इतना इनका कंज्यूम करना ही है। और इसमें एक ये है जो इम्पोर्टेंट चीज जो हम टेक अवे कर सकते हैं यहाँ से कि ओपन एक्सेस कंज्यूमर और कैप्टिव यूजर्स को उनको परमिटेड है कि आप पूरा एंटायर जो उनका रिन्यूएबल कंजम्पशन ऑब्लिगेशन है वो बायोमास कोफायरिंग से भी अचीव कर सकते हैं। बेसिकली दे कैन अचीव फ्रॉम एनी रिन्यूएबल एनर्जी सप्लायर। बट अगर वो मान लीजिए कैप्टिव पावर प्लांट है, अगर वो बायोमास कोफायरिंग कर दे से 20%, तो उनका जो ऑब्लिगेशन है 33% का, उसमें से वो 20-25% जो भी वो कोफायरिंग कर रहे हैं वो उन्होंने वहीं से मीट कर लिया। तो एक जैसे कैप्टिव पावर प्लांट हो गए या ओपन जैसे थर्मल पावर प्लांट है, उनके लिए भी एक ये है कि ये जो अगर वो बायोमास से जो एनर्जी जनरेट करेंगे तो दे आर बायर्स इन द मार्केट। उसी को इंश्योर करने के लिए ये आपका रिन्यूएबल कंजम्पशन ऑब्लिगेशन। एक है रिन्यूएबल जनरेशन ऑब्लिगेशन, ये थोड़ा पुराना नोटिफिकेशन है फरवरी 2023 का। इसमें जो नए पावर प्लांट्स है उनको भी आपको 30-40% रिन्यूएबल जनरेशन ऑब्लिगेशन मीट करना है, आइदर बाय इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और प्रोक्योर एंड सप्लाई रिन्यूएबल एनर्जी इक्विवेलेंट टू सच कैपेसिटी। सो इन शॉर्ट अगर आप देखेंगे ये सारी पॉलिसीज वी आर जो आप हम शुरू में बात कर रहे थे पेरिस एग्रीमेंट का कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, तो इसमें सारा ही इंटेंट यही है कि वी आर ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। और जो भी स्टेक होल्डर्स है उनको फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज, ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बनाती रहती है ताकि जो कोफायर कर रहा है उसको भी एक कॉन्फिडेंस रहे कि मेरा पावर परचेज हो जाएगा, और जो इसमें अदर स्टेक होल्डर्स है दे ऑल्सो पार्टिसिपेट विद कॉन्फिडेंस कि देयर इज अ फ्यूचर फॉर दिस। अब हम थोड़ा सा मिशन के बारे में जान लेते हैं कि ये मिशन क्योंकि इट वाज कंस्टिट्यूटेड इन 2021, सो इट इज हेडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर। थ्री टियर स्ट्रक्चर है इसमें, हेडेड बाय स्टीयरिंग कमेटी जो इट इज हेडेड बाय सेक्रेटरी पावर, देन कम्स एग्जीक्यूटिव कमेटी हेडेड बाय मेंबर थर्मल, देन कम्स मिशन डायरेक्टर हेडेड बाय आवर सर, अभी फिलहाल आरपी सर है, ही इज द मिशन डायरेक्टर। एंड इसमें 5 सब ग्रुप है, सब ग्रुप 1, सब ग्रुप 2, सब ग्रुप 3, 4, 5। ये सब ग्रुप का ऑब्जेक्टिव सबको डिफाइन किया गया है। सब ग्रुप 1 रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करता है। इसमें आपको जस्ट आगे भी पता चल जाएगा, आई शेयर कि कितना काम हुआ है। इसमें 12 प्रोजेक्ट अवार्ड किए गए थे और 10 कंप्लीट हो चुके हैं जिनकी फाइंडिंग्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसमें आपको सब मिल जाएगा। और मैं जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग है जैसे यहाँ शेयर करना चाहता हूँ, उसमें एनटीपीसी नेत्रा ने जो स्टडी की थी उसमें दे हैव कंक्लूडेड दैट 10% नॉन टॉरिफाइड बायोमास को फायरिंग इज सेफ। उन्होंने सारे फैक्टर्स उसमें सेफ लिमिट्स कंसीडर किए, मील करंट और अदर फैक्टर्स, एल्कली मेटल्स, क्लोरीन वगैरह सारा का फैक्टरिंग करने के बाद दे केम टू दिस कंक्लूजन कि 10% नॉन टॉरिफाइड को फायरिंग में देयर इज नो इशू एंड वी कैन गो विद इट, एंड 20% टॉरिफाइड बायोमास को फायरिंग, टॉरिफाइड पैलेट्स का को-फायरिंग थर्मल पावर प्लांट में इट इज सेफ। तो और भी है उसमें, और भी फाइंडिंग्स है, वो आप हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। 12 में से जो 10 प्रोजेक्ट हो चुके हैं उनकी फाइंडिंग्स है, और 2 प्रोजेक्ट उनको थोड़ा और काम दिया गया है, थोड़ा उनका स्कोप ऑफ वर्क और इंक्रीज किया गया है, तो इसलिए उनका कंप्लीशन मार्च 26 में हो जाएगा। और जैसे मैं सब ग्रुप 1 की बात कर रहा, सब ग्रुप 2 में है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, यहाँ बॉयलर डिजाइन के ऊपर और उसके अराउंड स्टडी करिए, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। और सब ग्रुप 3 जो है सप्लाई चेन पे काम करता है, लॉजिस्टिक्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट, क्योंकि इसमें जैसे मैंने कहा 3 स्टेक होल्डर्स है, फार्मर है, पैलेट मैन्युफैक्चरर या एग्रीगेटर, और थर्मल पावर प्लांट। तो खाली हम थर्मल पावर प्लांट पे तो नहीं काम कर सकते, तो ये सब ग्रुप है, सप्लाई चेन के ऊपर इनका फोकस रहता है। रेगुलर मीटिंग्स होती हैं स्टेक होल्डर से, पैलेट मैन्युफैक्चरर से, और उनके फीडबैक लिए जाते हैं। थर्मल पावर प्लांट के साथ मीटिंग होती है, उनके फीडबैक लिए जाते हैं, और बेस्ड ऑन दैट things are planned or communicated or integrated into the policy as well.
सबग्रुप 4 है वो क्योंकि ये एक प्रोसेस है जिसमें टेस्टिंग और आपका स्टैंडर्डाइजेशन भी इम्पोर्टेंट है। नया नया प्रोसेस है, नया को-फायरिंग इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, तो उसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनएबीएल लैब्स, सर्टिफिकेशन, ये काम सब ग्रुप 4 कर रहे हैं। सब ग्रुप 5 रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जैसे रेगुलेशन, क्योंकि थर्मल पावर जनरेशन, पावर परचेज, सप्लाई, ये मतलब इतना इजी नहीं है। इट हैज गॉट कॉम्प्लेक्स है, तो उसको एड्रेस करने के लिए जो हमारा सब ग्रुप 5 है, जो भी फीडबैक आता है सब ग्रुप 5 उसको स्टडी करता है, तो उसके सोल्यूशंस प्रोवाइड करना ये सब ग्रुप 5 का रोल। जो मिशन है, इट इज मेड अप ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब काफी सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से इंडिविजुअल्स हैं इसमें, सो दैट फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, शेयरिंग ऑफ मतलब एक्सपर्टीज, क्योंकि हमारे पास बीएचईएल से हैं, एनटीपीसी, एनपीटीआई, एमएनआरई से हैं, डीवीसी से हैं, सीए से हैं, आपका बीडब्ल्यूई से हैं और सीपीआरआई से। तो ये एक कोलैबोरेशन काइंड ऑफ थिंग है, और दिस इज मेकअप ऑफ मिशन। हमारे इनिशिएटिव्स क्या रहे हैं, चैलेंजेस क्या रहे हैं, डिटेल्स में हम आगे देखेंगे। इसमें हम देख लेते हैं क्योंकि ये स्टार्ट हुआ था तो एसओपी यहाँ से इशू हुआ था, फिर मॉडल कॉन्ट्रैक्ट इशू किया गया। मॉडल कॉन्ट्रैक्ट का इंटेंशन ये था कि मान लीजिए किसी को स्टार्ट करना है तो ही विल हैव अ गाइडलाइन कि भाई हाँ ये टेंडरिंग कॉन्ट्रैक्ट में ये स्पेसिफिकेशन भी है और क्या कंडीशंस है। तो इन जनरल की वो अपने कॉन्ट्रैक्ट के कंडीशंस भी डाल सकते हैं और एक इनका कंडीशंस भी मर्ज करके दे कैन कम अप विद फॉर टेंडरिंग एंड अदर पर्पस। तीसरा था कि जो स्टैंडर्डाइजेशन का जो हम बात कर चुके हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम मैं शेयर करूंगा आगे की। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम भी स्टार्ट हो चुका है। ऑलमोस्ट मोर देन 500 personnel from pellet manufacturers have been trained, और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इट इज अ वेरी न्यू सेक्टर और थोड़ा सा वी आर स्टिल इन डेवलपिंग स्टेज, सो काइंड ऑफ गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि हम जाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेलेबल मतलब ट्रेन करें, ताकि थोड़ा सा एक अवेयरनेस भी आए, स्पेशली सेफ्टी और ऑपरेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से। और फंडिंग के बारे में जैसे एमएनआरई, सीपीसीबी, दे आर प्रोवाइडिंग फंड्स, और आपको स्टेट गवर्नमेंट से भी काफी सारा लोन में और इंसेंटिव्स भी अवेलेबल हैं इसमें। तो जस्ट व्हाट वी हैव रीच्ड, क्योंकि हो गए यहाँ पर भी आपके 4-5 years मिशन को भी। तो टिल डेट सर ने भी शेयर किया कि 71 थर्मल पावर प्लांट्स में को-फायरिंग हो चुकी है। ऑलमोस्ट 37 लाख मेट्रिक टन ऑफ बायोमास हैज बीन को-फायर्ड टिल डेट, और जिसमें से एनसीआर में, जैसे मैंने कहा, एनसीआर ने सक्सेसफुली कर लिया है, तो वो आपको नंबर्स में भी दिखेगा। 28 लाख मेट्रिक टन जैसा एनसीआर के जो 11 प्लांट से इन्होंने को-फायर किया हुआ है, और पीओस भी हैं काफी प्लेस्ड। और ये हमने लास्ट टाइम भी शेयर किया था कि जो 2023-24 में जितना को-फायर हुआ था उससे 4 to 5 टाइम्स इंक्रीज हो गया है 24-25 में। और हम अभी आगे के स्लाइड्स में भी देखेंगे कि जो लास्ट ईयर किया था वो हम अभी एक क्वार्टर बचा हुआ है और अभी हमने अचीव कर लिया। तो यू कैन सी द नंबर्स इटसेल्फ, दे आर टेलिंग कि थिंग्स आर मूविंग इन राइट डायरेक्शन। और अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देयर विल बी सम एक्सीलरेशन, इंप्रूवमेंट होगा, तेजी से होगा, क्योंकि जो एक इनिशियल बॉटलनेक्स थे वो धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं। पॉलिसी एडवोकेसी में जो मिशन का रहता है, मिशन जैसे मैंने कहा, हम कंटिन्यूसली स्टेक होल्डर से इंटरेक्ट करते रहते हैं। थर्मल पावर प्लांट से, थर्मल पावर प्लांट ऑफिशियल्स, पेलेट मैन्युफैक्चरर्स, इनके साथ रेगुलर मीटिंग होती रहती है, और जो उनके फीडबैक रहते हैं उनके बेसिस पे उसको रिव्यू किया जाता है। और इफ वो इट इज लाइक फिजिबल और इट इज इकोनॉमिकली एंड टेक्निकली फिजिबल, तो उसे इनकॉर्पोरेट भी किया जाता है फ्यूचर पॉलिसीज में। अब अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम, जैसे दिस प्रोग्राम इज वन ऑफ द अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम। 108 अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गए हैं, इसमें ये 21 भी इंक्लूडेड है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम का इंटेंशन ये होता है कि we are able to communicate with more and more people to make them aware कि why we are moving towards biomass co-firing, and जो भी उनकी queries होती हैं to resolve that।
अब ये अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे एनपीटीआई के साथ है, और हमारे प्रिंसिपल डायरेक्टर सर जो एनपीटीआई से हैं उन्होंने शेयर किया कि साउथ में भी प्रोग्राम कराने चाहिए। तो मैं जस्ट शेयर करना चाहूंगा कि 2023 में करीमनगर में एक प्रोग्राम हुआ तेलंगाना में, फार्मर्स का इवेंट होता है जिसमें हम फार्मर्स को पार्टिसिपेशन होता है। और यहाँ से जैसे हम यहाँ ऑनलाइन प्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ एक फार्मर्स के लिए एक प्रोग्राम बनता है, और वहाँ बैंक से, पैलेट मैन्युफैक्चरर और भी अदर स्टेक होल्डर्स आके प्रेजेंट करते हैं। बेसिकली एक वर्कशॉप टाइप ही है वो भी। तो इस टाइप का प्रोग्राम करीमनगर में हो चुका है 23 में, और 2024 में बेल्लारी कर्नाटका में भी एक प्रोग्राम हो चुका है। सो वी आर डूइंग, साउथ में भी हो रहा है, 18 स्टेट्स कवर हो चुके हैं इसमें। और जैसे डिपेंड करता है कि कहाँ, फिलहाल अभी क्या है कि हम इसके साथ ना बर्निंग वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व करना चाहते हैं, कि जो बायोमास स्टबल बर्निंग का इशू है एनसीआर में, वो रिजॉल्व करना है। तो अभी थोड़ा सा फोकस एनसीआर में था अभी तक। उसका रीजन ही यही था कि कम से कम जो भी पोल्यूशन बर्निंग से हो रहा है उसको हमें रिड्यूस करने का ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये एक बढ़िया प्रोसेस है बायोमास को फायरिंग, जिसमें आप ये वाला भी जो स्टबल बर्निंग का इशू है वो भी रिजॉल्व कर सकते हैं। तो जब अगर इफ यू आर एबल टू मतलब इसको रिड्यूस कर पाए, तो ऑफ कोर्स वी आर मूविंग ऑल इंडिया। और पावर सेक्टर स्किल काउंसिल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ टाई अप है हमारा, और वी आर डूइंग दिस स्किल डेवलपमेंट। जैसे मैंने कहा कि 21 प्रोग्राम हो चुके हैं, एंड मोर देन 533, एग्जैक्ट नंबर इज 533 लोगों को ट्रेन कर दिया गया है। और हमारा प्लान है नेक्स्ट 3 इयर्स में 1500 मैन पावर को ट्रेन करना। सो बेसिकली वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन। और एक 10 जून को इसी साल एक वो कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, आप लोग को पता होगा, काफी लोग इसमें से भी पार्टिसिपेट किए होंगे, एक्सीलरेटिंग बायोमास को-फायरिंग कॉन्फ्रेंस का भी ये ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस होता है। यहाँ जगह जगह से लोग आते हैं, हम एक्सपर्ट्स बुलाते हैं, वो वहाँ सेशंस देते हैं, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, और बेसिकली ये वही इट इज पार्ट ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम। और इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एमएनआरई, जैसे मैंने कहा, सीपीसीबी, एमएनआरई, दे आर गिविंग फंड्स आपको पर टीपीएच के हिसाब से। एमएनआरई में भी है, और सीपीसीबी में है 28 lakhs पर टीपीएच के हिसाब से आपको फंड्स मिलते हैं, ग्रांट्स मिलते हैं। एमएनआरई में भी है, नॉन टॉरिफाइड के लिए 21 lakhs है, और टॉरिफाइड के लिए 42 है। और ये 5 टाइम्स तक जाता है, 5 टाइम्स इन द सेंस 21 लाख है तो 1 करोड़ 5 लाख जितना तक दे देगा वो आपको, और या 30% ऑफ द कॉस्ट। वो आप एक बार उसको देख लेना, क्योंकि ये सारी, कहने का मतलब ये है इन शॉर्ट कि ये खाली मिनिस्ट्री ऑफ पावर नहीं, अदर मिनिस्ट्री जैसे पोल्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वो भी सपोर्ट कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, उसका भी सपोर्ट है। और हमारे मतलब एवरीवन इज टेकिंग स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन। बैंक लोन्स में भी ये आरबीआई ने इसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में इंक्लूड किया हुआ है। सो वी आर ट्राइंग टू एवरीवन, मतलब एज अ कंट्री एवरीवन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। आर&डी में जैसे मैंने कहा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 10 प्रोजेक्ट्स हो गए 12 में से, और 2 मार्च तक हो जाएंगे। आप इसकी फाइंडिंग्स हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, इट इज रेडीली अवेलेबल। NABL एक्रीडेटेड लैब्स जो टेस्टिंग के लिए होती हैं, वो 26 नंबर्स अचीव कर चुके हैं। हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स 20 अचीव कर चुके हैं। बाकी तो स्टबल बर्निंग के ऊपर, स्टबल बर्निंग का आप देख ही रहे होंगे कि काफी रिडक्शन है। जैसे अभी हम पानीपत गए थे, तो वहाँ जो एग्रीकल्चर ऑफिसर है उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा बहुत 90-95% जैसा रिडक्शन है पानीपत डिस्ट्रिक्ट। तो इसी तरीके से जो कहने का मतलब है कि जो एनसीआर रीजन में है, देयर इज इम्प्रूवमेंट इन हरियाणा, पंजाब। कोर्स गवर्नमेंट स्कीम्स भी हैं, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स रहती, ये सारा मिल के वी कैन सी सम रिजल्ट्स। कहने का मतलब जैसे मैंने कहा, ऑल इंडिया टीपीपीज का परफॉर्मेंस लास्ट 2023 से 24-25 में 4 to 5 टाइम्स 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया है। एनसीआर का 5 टाइम्स इंक्रीज, क्योंकि एनसीआर में अच्छी को फायरिंग हो रही है कंपेयर टू ऑल इंडिया। सो यू कैन सी द नंबर्स।
कि अगर आप इसमें जस्ट एक, अगर आपको खाली एक इस ग्राफ में देखना है इंडिकेटिव, तो आप ये देख सकते हैं कि अराउंड 16 लाख मेट्रिक टन 24-25 में पूरे साल में हुआ था ऑल इंडिया, और जबकि 16 लाख के अराउंड हम 25-26 में अभी पहुंच गए हैं। अभी एक क्वार्टर बचा हुआ है, और ये क्वार्टर क्या है, को फायरिंग होती है क्योंकि आपका मानसून पीछे चला गया, उसी में थोड़ा ड्रॉप होता है, तो वो इंक्लूड करने के बाद हम 16 लाख पहुंचे। मतलब नेक्स्ट 3 मंथ्स वी आर एक्सपेक्टिंग मच बेटर रिजल्ट कंपेयर्ड टू प्रीवियस ईयर। ठीक है, अब एनसीआर में देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा 5 टाइम्स इंक्रीज है, और एनसीआर में भी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में टोटल को फायरिंग हुई थी 12,97,000, 12,97,000 मेट्रिक टन। उसके अगेंस्ट अभी हम दिसंबर अभी पूरा नहीं हुआ, ये नवंबर तक का डेटा है, अभी मोर देन अ क्वार्टर, मतलब 4 महीने बचे हुए हैं, और हम ऑलरेडी 12,11,000 पे है। सो द पॉइंट इज की things are moving, or we are expecting more and more thermal power plant to participate in this country's objective of moving towards biomass co-firing. जैसे ऑल इंडिया ग्रोथ, ये पैलेट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जैसे ग्रो की है, अगर आपने ध्यान दिया होगा स्टार्टिंग के स्लाइड में हम ये देख रहे थे कि अगर पूरा इंडिया जो इंस्टॉल कैपेसिटी थर्मल पावर प्लांट है, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, अगर वो 5% को फायरिंग करते तो 1 लाख टन पर डे जैसा आपको चाहिए रिक्वायरमेंट। तो एज ऑन डेट तो ये थोड़ा सा अगस्त का डेटा है, लेकिन फिर भी वी कैन से कि इससे बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। 33,000 जैसा इंस्टॉल कैपेसिटी है, तो उसमें से 19,000 ही यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है। लेकिन एनीवेज वी आर इम्प्रूविंग। आप देखेंगे 2022 से और आज तक इसमें बहुत ही सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। अगर आप देखो तो मोर देन 4 टाइम्स इंक्रीज है। जो आपने देखा को फायरिंग जिस रेंज में बढ़ रही है, उसी रेंज में आपका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी भी बढ़ रहा है। और थोड़े से हम चैलेंजेस के बारे में बात कर लेंगे। चैलेंजेस में जो आने वाले सेशंस में भी आप देखेंगे, हमारे एक्सपर्ट्स हैं, एनटीपीसी दादरी से हैं, अप्रवा जजर से। हमने इस बार एक एक्सपर्ट को रिक्वेस्ट किया है, ही विल बी जॉइनिंग अराउंड 3 PM for say MSW if possible, because he was traveling, तो थोड़ा सा कंस्ट्रेंट था। बस 3 o'clock को he will be joining for MSW, जो चारकोल से को-फायरिंग का जो पॉलिसी में है, that he will be taking a small session on that as well। तो बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं उसका बारे में आपको आगे भी पता चल जाएगा। मैं जस्ट टच करके इसके जस्ट टॉपिक को टच कर लेते हैं एक बार कि टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट, जैसे मैंने कहा, इसमें अल्कली मेटल्स होते हैं, थोड़ा सा क्लोरीन का, हेलोजेंस का प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट काम करना पड़ रहा है और टेस्टिंग करनी पड़ रही है, एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट। मोस्ट प्रोबेबली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी विल बी एबल टू इंक्रीज को-फायरिंग इन थर्मल पावर प्लांट्स। और दूसरा था पैलेट प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो हमने जस्ट अभी देखा कि 1 लाख टन पर डे जैसा आपका रिक्वायरमेंट है खाली 5% को फायरिंग के लिए भी, तो उसमें भी अभी वी आर स्टिल टू गो अ लॉन्ग वे। ये सप्लाई चेन इश्यूज, ये वही है कि अगर आपका कैपेसिटी अगर नहीं रहेगा। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम आता है, मैंने देखा है कि थर्मल पावर प्लांट कहते हैं कि कैपेसिटी मतलब हमारे आसपास नहीं है पावर पैलेट प्लांट। पैलेट प्लांट वाले कहते हैं कि कोई हमारा टेक नहीं होगा, कोई हमारे वहाँ मिलेगा नहीं, तो हम जाएंगे कैसे। तो बेसिकली ये थोड़ा सा आपको एक थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा। मैं तो थर्मल पावर प्लांट्स ऑफिशियल्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा आप अपनी एंड से इनिशिएटिव ले, और अगर इफ पॉसिबल try to engage with other power plants, how they are able to build the supply chain and able to start co-firing। क्योंकि एक एक स्टेप आप लेते रहेंगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आप देख रहे हैं हम पेरिस एग्रीमेंट 2025 में हुआ था, 2015 में हुआ था, और हम 10 साल बाद भी हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ऐसा होगा कि फ्यूचर में भी हम वी माइट बी आफ्टर 10 years वी माइट बी टॉकिंग अबाउट दिस थिंग्स। सो जितना जल्दी आप इसमें पार्टिसिपेट कर लें, जितना आप को-फायरिंग करें, एटलीस्ट टेक स्टेप्स। और को-फायरिंग वी डोंट एक्सपेक्ट कि खाली आप को-फायरिंग करें। मैं तो थर्मल पावर प्लांट से वी आर एक्सपेक्टिंग एज वेल कि आप कैसे इसको इंप्रूव कर सके, इंप्रूव इन द टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, इंप्रूव इन द टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड ओवरऑल। क्योंकि जब इंडिया जैसे कंट्री है जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे काम करता है, तो व्हेन लार्ज स्केल कोई अगर पैलेट सप्लाई कर रहा है तो उसका कॉस्ट भी कम होना चाहिए। और जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगी,
क्योंकि अभी ये थोड़ा सा नेसेंट स्टेज में है, तो थोड़ा सा कॉस्टली है, टॉरिफाइड भी और ये भी। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी आर एक्सपेक्टिंग थिंग्स विल मूव इन सच डायरेक्शन कि इट विल बी इक्वलेंट और मे बी नॉट इक्वलेंट टू, नॉट लेसर तो इक्वलेंट टू कोल। कि आप कोल को रिप्लेस जब हम करेंगे तो कोल के कॉस्ट में आपका पैलेट आना चाहिए और कोल के उसमें आपका एफिशिएंसी आउटपुट, मतलब रिप्लेसमेंट, मतलब इट शुड बी लाइक वी आर co-firing biomass and it has no impact. We are efficient and the cost is almost in the same range. तो ये एक्सरसाइज क्या है, ये कौन कर सकता है? ये थर्मल पावर प्लांट ही कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ऑपरेशनल एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है, और वो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ऑपरेशन जो कहा जाता है वो उन्हीं के हाथ में है, और उनका नॉलेज और उनकी एक्सपर्टीज अब इंडिया के पास जो वो है नो हाउ, उसको यूज करके हमें इस डायरेक्शन में काम करना चाहिए। और इसमें एक चैलेंज एग्रीगेशन स्टोरेज का भी आता है, जिसपे अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं। लास्ट वीक भी हमारी एक मीटिंग हुई थी, उसमें भी वी आर सीइंग कि पीपल आर गेटिंग इनटू दिस बिजनेस ऑफ एग्रीगेशन एंड स्टोरेज। सो फ्यूचर में ये एक कुछ स्टार्टअप्स हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ब्राइट फ्यूचर है इसका। तो आज के डेट में ये चैलेंजेस हैं, बट वी आर वर्किंग ऑन इट, और आप लोग का भी इसमें कंट्रीब्यूशन है, और डेफिनेटली विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन। ट्रस्ट एरियाज, जैसे मैंने कहा, चैलेंजेस को ही हमें सॉल्व करना है। तो पहले डिमांड ये कैसे इंक्रीज होगा, ये पूरा थर्मल पावर प्लांट पे डिपेंडेंट है। और थर्मल पावर प्लांट ऑफिशियल्स के लिए मुझे मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि जैसे आप देख रहे हैं एनसीआर में, अगर आप एनसीआर का ट्रेंड देखेंगे, बहुत सारे पावर प्लांट है वो आराम से 5% 10% को फायर कर पा रहे हैं और विदाउट एनी इश्यूज। तो यू शुड टेक अप विद देम। और थोड़ा सा अभी जैसे एक सेशन है अप्रवा झज्जर का, आप उनसे भी सुनिएगा, उनसे क्वेश्चन आंसर करके आप काफी सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन गो एंड इम्प्लीमेंट इन योर प्लांट्स, so that we are able to increase this number of 71 to a higher side. और जैसे आपने ये वही है, जैसे हमारे मिशन से भी हमने यही कम्युनिकेट किया कि वंस थर्मल पावर प्लांट आर कन्विंस्ड और उनका कॉन्फिडेंस है कि दे कैन मूव फॉरवर्ड, दे स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड। जैसे ही आप टेंडरिंग स्टार्ट करोगे, यू विल स्टार्ट गेटिंग पैलेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स नियर बाय, आपका पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा। और इस पे काम हो ही रहा है, टॉरिफाइड नॉन टॉरिफाइड पैलेट मशीन्स पे वी आर वर्किंग ऑन इट। बहुत ही जल्दी इसका शायद एक स्टैंडर्डाइज्ड मशीन के लिए भी एक आपको स्टैंडर्ड रिलीज हो जाएगा, इस पे काम हो रहा है। वर्कफोर्स कैपेसिटी बिल्डिंग, जैसे मैंने कहा, स्किल डेवलपमेंट एक्सरसाइज, वी आर वर्किंग ऑन इट। सो आई विल जस्ट थैंक यू एवरीवन फॉर दिस पेशेंट लिसनिंग। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि ये वर्कशॉप में एनपीटीआई और हमारा ये रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपर्ट्स को, मतलब जो हमसे रेलेवेंट हो, उनको यहाँ प्रेजेंट करने के लिए इनवाइट करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा रहिएगा, पूरा ऐसे सुनिएगा और मेक बेस्ट यूज ऑफ दिस वर्कशॉप। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Manoj Kumar sir. Thank you for your detailed discussion about SAMARTH mission's policies as well as the initiatives of the Government of India. There are some questions in the chat box, Manoj Kumar ji. Can you just go through it? एक मिनट, just see है ना। ओके, ये नीचे से स्टार्ट कर देना। तो somebody had asked that expected timeline for commencement of biomass pellet co-firing across all NTPC plants in Bihar. So एक एनटीपीसी प्लांट्स बिहार, तो बिहार का जो पावर जनरेशन है पूरा एनटीपीसी डिपेंडेंट है। अगर आप थोड़ा देखेंगे कि जो भी उसकी इंस्टॉल कैपेसिटी है वो पूरी ज्यादातर एनटीपीसी की है, और तो मेरे को याद नहीं है कोई उसमें प्लांट। तो अगर, और एनटीपीसी आपने देख लिया कि एनटीपीसी का बहुत ही को-फायरिंग में दे आर लीडिंग काइंड ऑफ। टोटल आपके एनटीपीसी के ही टोटल ऑल इंडिया में 19 प्लांट्स को फायर कर रहे हैं, जो 2 एनसीआर में है, बाकी 17 है, तो 19 के करीब उनके प्लांट्स को फायर कर ही रहे। और एनटीपीसी तो मैंने देखा है जहां पर भी है, दे आर टेकिंग इनिशिएटिव्स, उसमें उनका रहा है। और मोस्ट प्रोबेबली वी आर एक्सपेक्टिंग कि बिहार में दे विल स्टार्ट। कहलगांव में अभी एक इवेंट हुआ था बहुत 6 दिसंबर को, और इवेंट फार्मर इवेंट था, बेसिकली अवेयरनेस इवेंट था।
और उसमें एनटीपीसी, थर्मल पावर प्लांट, पैलेट मैन्युफैक्चरर और फार्मर्स, इन ये दे पार्टिसिपेटेड। और मतलब मिशन की तरफ से तो स्टार्ट हो गया है। जो आपका क्वेश्चन है, मिशन ने एक्शन ले लिया है उसमें। अब लेट्स सी, वी आर एक्सपेक्टिंग कि बहुत शॉर्टली दे विल स्टार्ट, स्पेशली कहलगांव से वी आर एक्सपेक्टिंग। ओके, तो दैट इज वी यूज so somebody, Mr. Joy David has said, we have co-fired in plant. As usual, we use 15 to 20% biomass used in our thermal power plant. So good. मैं जो बात हम कर रहे हैं कि अभी लोग कर रहे हैं 15 से 20%, जॉय डेविड जी ने लिखा है। What will be the cost of power with biomass co-firing 7% versus domestic coal? देखिए क्या होता है ना, ये आर्क ज्योति सेन जी का क्वेश्चन है कि जब आप कोल से compete करोगे, कोल में भी वेरिएशन है। पीटेड प्लांट का कोल का प्राइस अलग होता है, अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है थोड़ा अलग होगा, उससे तो थोड़ा हायर साइड है, 7-8 रुपया पड़ रहा है जैसे अगर आप बेंचमार्क प्राइस कंसिडर करोगे। तो एज ऑन डेट ये थोड़ा सा कॉस्टली प्रोविजन, कॉस्टली मतलब इतना नहीं, मतलब फिर भी है कंपेयर टू कोल, अगर आप बोलो तो इट इज कॉस्टली। बट मैंने जैसे कहा, वी आर एक्सपेक्टिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट और जो हमारा ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट की वजह से वी आर एक्सपेक्टिंग कि थिंग्स विल इंप्रूव, विल गो एटलीस्ट इक्वलेंट टू कोल। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ स्टेटमेंट्स है, कुछ क्वेश्चंस है। तो अगर आपका क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क डाल देंगे ना, तो मैं सीधा उसी को पढ़ूंगा। There is a question there. Is biomass co-firing applicable to lignite-based power plant? या आप कर सकते हैं, आपको थोड़ा अपने OEM से टेकअप करना है एंड यू कैन गो फॉर लिग्नाइट बेस्ड पावर। बट ये है कि आप उसमें अगर कुछ ऑपरेशनल चैलेंजेस है वो आपको चेक करना पड़ेगा। इसलिए देखिए, कोई भी थर्मल पावर प्लांट का हमारा स्टेप 1 होता है, यू टेकअप विथ योर OEM, है ना, क्योंकि प्लांट टू प्लांट एक अगर दो 600 मेगावाट के प्लांट या 660 मेगावाट के प्लांट लोगे आप, तो वो अलग हो सकते हैं, मतलब उनका बेस्ड ऑन देयर OEM, मतलब कौन उनको इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, किसने किसको सप्लाई, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। तो आपको OEM को इन्वॉल्व करना है और उनसे कंसल्ट करके एंड देन यू कैन मूव फॉरवर्ड। So can you take the last one, sir? Is there any scope in tender for a new manufacturer of pellet? Is there any tender for new manufacturer of pellet? देखिए क्या हो रहा है, NCR में ना शुरू में काफी आपने देखा होगा कि टेंडरिंग में सपोर्ट आपको मिला होगा। अब NCR में बेस बना है, तो NCR के जैसे अभी हम जो रिसेंट टेंडर्स वो कर रहे हैं, जैसे कल हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, जो NTPC झज्जर में नया टेंडर आया है, तो उसमें उन्होंने बहुत छोटा रिक्वायरमेंट रखा है कि आपने साल भर में 5000 मेट्रिक टन सप्लाई किया हुआ होना चाहिए, और अगर नहीं है तो आप JV करके एक कंसोर्टियम बना के यू क्वालिफाई रिक्वायरमेंट आप पार कर लोगे, और देन यू कैन सप्लाई इन जो भी आपका जॉइंट वेंचर में जो भी आपका एग्रीमेंट हो जाए कि भाई कितना परसेंटेज करना है, तो NCR रीजन में आपको मिल जाएगा। और बाकी जो नए जगह पे है वहां तो आप यू कैन टेक अप विद द पावर प्लांट, इन केस अगर वो ऐसी कोई कंडीशन डालते हैं आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली दे वुड गिव लिबर्टी ऑन दिस, क्योंकि वहां पर उनको सप्लाई चेन डेवलप करना है। जहां डेवलप हो गए वहां तो खैर थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस, क्योंकि एक आपको ना थर्मल पावर प्लांट का भी पॉइंट ऑफ व्यू देखना पड़ेगा, क्योंकि एज अ थर्मल पावर प्लांट जो वहाँ ऑफिशियल्स हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब मेरे को 5% को फायर करना है तो मेरे पास रिलायबल सप्लायर हो, है ना। तो वो इंश्योर करने के लिए वो ये सब थोड़े कंडीशंस रखते हैं कि जो जिसका प्रीवियस एक्सपीरियंस है टू बी ऑन सेफर साइड। लेकिन अगर इन केस आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है, आप ज्वाइंट वेंचर करके यू कैन पार्टिसिपेट इन टेंडर एंड फिर आपको वो हो जाए, उसके बाद यू कैन मूव। ठीक है मनोज सर, एक क्वेश्चन आया हुआ है, इज देयर एनी सीलिंग फिक्स फॉर रेगुलेटर ऑन पावर पोस्ट विद बायोमास को-फायरिंग? आकर ज्योति सेन का। तो सेन जी एक्चुअली कोई सीलिंग फिक्स नहीं है पावर पोस्ट के ऊपर। जो सेक्शन 62 के थर्मल पावर प्लांट है उनके लिए कोस्ट पास थ्रू है,
जो भी इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, और जो सेक्शन 63 के प्लांट है वो चेंज इन लॉ में क्लेम कर सकते हैं, जो भी जो इंक्रीमेंटल जो भी कंपनसेशन बनेगा उसके लिए। तो एज सच CERC का या किसी और अप्रोप्रिएट कमीशन का कोई फिक्स नहीं है, जस्ट इंफॉर्मेशन। मीटिंग है, मीटिंग है। सर एक क्वेश्चन था। बोलिए। My name is Suraj Kobragade. I'm from Chandrapur, and we are in the process of setting up a biomass plant, or we are looking for some avenues or opportunities that we can set up in or around Chandrapur. So there is a power plant, Dhariwar power plant, and various other power plants. So I wanted to understand: is there anyone in or around this area where to whom we can contact and communicate with all these power plants? There is also CTPS Chandrapur. चंद्रपुर के पास बूटी बोरी भी है ना रिलायंस का, आई थिंक। हाँ सर, हाँ सर, बूटी बोरी भी है। बूटी बोरी थोड़ा है, मतलब नागपुर के पास है। हाँ मतलब वो बीच में पड़ता है, रास्ते में पड़ता है क्या नागपुर जी से सर। उधर, है ना? जी तो सर। जो तो सर, वो, हाँ वो आपको एक्सप्लोर करना चाहिए पावर प्लांट्स के साथ, और यू कैन मीट देयर ऑफिशियल्स, और एक बार आप देख लीजिए अगर ऐसा है कुछ, तो वो आपको तो एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्योंकि कहाँ जहां आप लगा रहे हैं आपके आसपास क्या फिजिबिलिटी है वो थोड़ा आपको करना पड़ेगा। बाकी अगर ऐसा कुछ है तो एक बार आप समर्थ मिशन की टीम से मिल सकते हैं, वो भी थोड़ा गाइडेंस दे देंगे इन केस यू हैव एनी क्वेरीज। वो यहाँ आपके जो जो भी वो रहेंगे ना, थोड़ा उनके पास इंफॉर्मेशन डेटा हमारे पास रहता है, तो वी कैन शेयर। तो आप एक बार समर्थ की टीम से आप या तो मेल कर देना या तो मिल लेना, है ना? जी सर, जी सर। Also, I wanted to understand, sir, are there any government, as in like subsidies or any aid programs available for setting up a biomass power plant? हाँ है ना, जैसे मैंने आपने प्रेजेंटेशन में देखा होगा कि जो एमएनआरई है, एमएनआरई आपको देता है, एमएनआरई आपको आई थिंक 21 लाख पर टन, 1 टन पर आवर का प्लांट लगाएंगे तो 21 लाख में देगा। तो वो प्रो रेटा बेसिस पे 5 तक जा सकते हो आप, 5 तक इन द सेंस 1 करोड़ 5 लाख का शायद सीलिंग है, ठीक है? तो वो आपको नॉन, अगर आप नॉन टॉरिफाइड की हम बात कर रहे हैं ना, हेलो, जी सर। मैं नॉन टॉरिफाइड की बात कर रहा हूँ। अगर आप टॉरिफाइड पे जाओगे तो डबल ऑलमोस्ट 42 लैक्स पर टन पर आवर वो वाला मिलेगा आपको, और वो 2 करोड़ जैसा प्लस जाएगा, वो इंटू 5 कर देना। तो कहने का मतलब एमएनआरई का है, अगर आप प्लांट लगाएंगे तो वो है। दूसरा और भी आपको इसका भी है, बैंक से भी आपको थोड़ा वो मिलेगा, जैसे इंटरेस्ट में 2-3% का कुछ एडवांटेज होता है। एसबीआई से आप टेकअप कर सकते हैं, लोन की बात कर रहा हूँ। और भी है, स्टेट गवर्नमेंट के भी आप थोड़ा एक बार चेक कर लीजिएगा, हर स्टेट का अलग अलग होता है। कुछ कुछ जैसे हरियाणा और पंजाब में भी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी इंसेंटिव्स रहते हैं। तो यू हैव टू टेक स्टेट में, आप जैसे महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो वहाँ एक बार आप चेक कर लेना कि वहाँ स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या प्रोविजन दे रही है, क्योंकि किसी किसी स्टेट का खुद का जैसे ये बायो एनर्जी का पॉलिसी होता है, तो उसके अंडर भी उन्होंने काफी सारे वो दिए रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक दे रहा हूँ, जैसे हरियाणा में है, हरियाणा में अगर आप जाओगे, यहाँ पे सर, हाँ हाँ सर, प्लीज गो अहेड। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे हरियाणा में क्या वो जो होता है कि कुछ अगर आप वो लैंड कन्वर्जन वो नहीं करना पड़ेगा आपको, जैसे सीएलयू लेते ना, चेंज ऑफ लैंड यूज। अगर एग्रीकल्चरल लैंड पे कोई इंडस्ट्री लगाने जाएंगे तो आपको सीएलयू लेना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन से, रजिस्ट्रार से, ठीक है? वो इसमें जरूरत नहीं पड़ती। आप अगर मान लीजिए फार्म लैंड है, उसी पे आप अपना प्लांट लगा रहे हैं, कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो, तो इट गो। और मेरे ख्याल से सीटीयू क्या जो कंसेंट टू ऑपरेट, कंसेंट टू एस्टेब्लिश, इसके भी शायद जो चार्जेस होते हैं वो एग्जेम्प्टेड रहते हैं हरियाणा में। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप ये महाराष्ट्र में एक बार चेक कर लेना कि महाराष्ट्र में क्या क्या गवर्नमेंट ने आपको वो दिया हुआ है, एंड यू कैन मूव फॉरवर्ड इन दैट डायरेक्शन। सर यहाँ पे मतलब नरेंद्र मोदी एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत कुछ काम हुए हैं, और देवेंद्र फडणवीस उन्होंने भी कुछ चालू किए थे, बट
I'm not sure how much conducive they are, how much new beginner friendly they are. तो ऐसा मैं सोच रहा था कि यहाँ पे is there any office where we can communicate or get help from? नहीं, मैंने जैसे आपसे कहा, आप मिशन की एक टीम है, मिशन में आके भी आप उनसे मिल सकते हो, आपके काफी सारे डाउट्स वो क्लियर कर देंगे, हेल्प कर देंगे आपको बेसिकली। और स्टेट गवर्नमेंट का तो आप खुद ही एक्सप्लोर कर लीजिए एक बार। सेंटर का तो मैंने बता दिया, MNRE का जो सब्सिडी है वो आप अवेल कर सकते हैं, उसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। और जो सेंटर का भी ले सकते हैं आप, स्टेट का, दोनों का साथ में भी ले सकते हैं, है ना। तो यू कैन, वो आप एक बार थोड़ा चेक कर लीजिए, और आपको स्टेट गवर्नमेंट में जो भी आपको फैसिलिटीज है तो वो आपको वहां से मिल जाए। आप ना एक बार जो एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट होता है ना आपका, उनसे भी एक बार आप मिल लीजिए वहां पे, क्योंकि एग्रीकल्चर वाले भी काफी सारे वो देते हैं, जैसे मतलब उनके भी काफी सारी स्कीम्स चलती रहती है, तो एक बार आप उनसे भी मिल लीजिए। Thank you, sir. Surely, sir. Thank you very much for addressing my questions. Thank you, Manoj Kumar sir. You have taken a number of questions here. Thank you. So still we have got questions regarding technical. We will handle it in the subsequent session, sir. Manoj Kumar ji, हाँ हाँ, बोलिए। the technical questions we can take it up in the subsequent session, sir. Okay. Yes. Most will be addressed during the sessions Yeah, itself. during the sessions we will address. Last में जो बचेगा we'll answer. We will have a discussion, sir. Okay. Thanks a lot, sir, for having a detailed presentation on Samarth mission's objectives and policies. Thank you very much. So, microphone. We have with us Dr. Sarana Bhavan, energy consultant joining from United UK. Sir is going to discuss about combustion technology regarding international experience and combustion practices followed in the global scenario. So Dr. Sarana Bhavan basically is a mechanical engineer, and he has also done his masters in energy engineering, and he has done his PhD in the same field. And he was previously with NPTI as an assistant director at NPTI Neyveli, and he has also served at the corporate office of NPTI before moving to UK renewable energy sector on the biomass co-firing sector of various thermal power plants in UK. So all the way from UK, we have a special guest here, Dr. Sarana Bhavan, joining with us. Thank you, Sarana Bhavan sir, for joining. Yeah, thank you very much, Sandil Kumar, for the introduction. And yeah, I'm happy to discuss about some of the co-firing with the international expert of biomass with the international perspective. I cover mostly with the United Kingdom, what we have done and what are the projects that I have worked on that basis. Yep. Okay. So in this presentation, I talk about the installed capacities. Can you hear me? Yes, sir, you are audible, sir. Yeah, okay. In this presentation, I cover the installed capacity of the UK, what is the biomass mechanisms, and what happens with the coal-fired plants in the UK, and how we are using alternatively the biomass, and the measures that we apply for biomass for the energy use, and what are the issues and the emission related things with the biomass I cover. Yeah, if you see the UK's installed capacities, which is in your thing, it's roughly about 70 to 75,000 megawatt in total. And out of which, if you see initially the coal-fired plants in 1996, which was comprising about 25,000 megawatt, and slowly it has come down in 2020 to only 5,000. Now in 2025,
there is no coal is being used here in the UK. So all the coal is, and the data is not available after that, so I couldn't add it down. Yeah, so there is no coal is there, and the oil fired is the one which is in the yellow, and the gas fired, mostly combined cycle power plants which are there, and then some mixed and dual fuel fired plants which are also thinning down over the period, and nuclear stations which are more or less same, roughly about 4,000 to 5,000 megawatt. And if you see the hydro, which is a smaller, and then pumped hydro, onshore wind, offshore wind, and wave and tidal, solar, and the red one is the biomass. You can see from 1996, it was very, very small, but over the period, the share has increased considerably. And some of them, like other biomass fuels, are waste energy fuels, which we are using it here in the top. So this is this trend here, and you can see this. And this is the fuel which is currently on that. There's a grid which is there. If you go to the UK grid, you can be able to find out what are the the current amount of the power generation. So currently, if you see here, even though we have about 75,000 megawatt, the demand is only 26,000 megawatt, maybe 27,000 roughly, and out of which the renewables are contributing about 43%, which is 11.5, and some of the carbon neutral, which is giving 12.25%. That means if you see here, the carbon emissions have been considerably coming down, almost say 89% of the projects which are coming from carbon neutral basis. And if you see here, the nuclear, which is 3,600 megawatt, combined cycle 14,300 megawatt, and biomass is 2,870 megawatt. So which comprises about 11%. So this biomass is working more or less as a base load, and over the day when we are progressing from morning 6 o'clock to 12, this load will increase and it reaches to SAS about 50,000 megawatt. And there are some integrating connections from France, Netherlands, and other places. So there will be some kind of interlinkages. Sometimes the UK will provide the power to them, and sometimes UK will get the power from them, and all sort of thing, because it is for the intergrid. So from one nation to another nation, there's a kind of thing. And if you click here in this area, you can be able to find out the complete reports and their things online straight away. Yeah, so whatever I explained, the same thing is here in a kind of a dial, and you can see from here about this demand and renewables and carbon neutral fuels, nuclear, combined cycle, biomass, wind, and solar, and all sort of thing. Because it's morning, there's no power generation from solar. In coal, there is no, and oil, there is no. Open cycle, there is no power. And pump storage, it is being used for pumping. That's why it's showing negative at the moment. And hydro plants, which are giving about roughly about 500 kilowatt. So that's the kind of situation. Comparing to the India, which is nearly about 3,000 megawatt, 300,000 megawatt plus, and nearly it is, I think the latest figures goes even 350,000. So if you see that, it is roughly about roughly about 1/7 of the UK India's power generation. So India is the biggest power generation. But if you see the UK's land mass, which is 13 times smaller, so whatever in India you're consuming the power, almost double the time the power is being consumed in the UK.
So as I mentioned, the coal power in the UK, there is no coal power as of today, and there were only 3 power stations: West Burton, Ratcliffe, Kilroot, and all the plants have been now shut down. And the biomass and waste is increased now from 7,000 megawatt from the 2012 one. UK renewable sources, if you see here, the biomass is not consider only the renewable sources here, other than the bioenergy which is there. If you see that yellow one, the total contribution is considerably increased over the years from a smaller amount in 2005 to 2020. And this is the another thing. You can see electricity flow, how it is coming from, where it is going, and all sort of thing. Like these numbers are also changing constantly because some of the productions in the iron and steel and other industries are also changing. Like if you see here, what are the total, the contribution, out of which 80% goes for other industries and 2% goes for iron and steel. 2 terawatt goes for iron and steel, and 80.3 terawatt goes for other industries, and 14 terawatt goes for transport, 94.4 for domestic, and 81.8 is the other consumers which are not listed here. And some exports is also being considered, and sometimes imports as well. And if you see here, the major consumer is domestic, whereas in India this would be slightly different. It is industrial kind of use is much higher in India, whereas in the UK the power is mostly being used in domestic and transport purposes, and slightly lesser amount is being used for industrial purposes. In the case of renewables, if you talk about the solid biomass, which contributes about 69%, and heat purposes is for nearly about 31 purpose. So here in the UK, some of the networks are used for domestic heating as well. There will be a heat and power plants. Some of them are using power generation, and some of them mainly used for heating the utilities or the industrial systems or homes or something like that. That means there will be no power generation, but only the steam generation is being considered. And if you see this BBC ones, you can see that the renewable overtake coal as the world's biggest source of electricity on 7th of October 2025. So that means all the energy generation coming from renewables are constantly changing from the coal, and this is also evident from the various agreements provided at COPs 30 and other conferences, where they are increasing this use of renewables to mitigate the carbon dioxide emissions and improving the situations on the global warming. So we have discussed all, so I just to skip this. In terms of the co-firing technology, there are generally, many people would have been discussed earlier. One is the direct firing, indirect firing, co-firing to dedicated firing. So in the UK, we have worked mostly on the co-firing and dedicated firing technologies, and hardly we use direct firing, and we have used some projects on indirect firing. Let us talk about what is the co-firing on a direct. The thing is, like, you take the coal from the bunker and you use the biomass, use it in the same coal mill, and the mixture of the coal and biomass put together into the coal burner, and then that burner is combusted using in the boiler so that the energy is being used. But you have to note down that this biomass is without any process,
So whatever you are collecting it in, you are collecting it with the coal milling. But in order to do this, coal milling has certain characteristics of milling the coals. But if you are putting the biomass without any classifications or something, it is not that much effective. So direct milling is considered for very low quantities, whereas the biomass is not that much in terms of the quantities. Um, in this co-firing, biomass milling is done separately and coal milling is also done separately, and the milled products are passed through a same burner, and this is a biomass and coal mixed burner, and then it will be passed to the boiler. Dedicated biomass burning is generally being envisaged. Most of the projects I involved, we have used this dedicated biomass co-firing because we wanted to achieve roughly about 20% of the co-firing in the 500 to 600 megawatt range. So for that purpose, we need to have roughly about 100 megawatt generation from the biomass. And for that purpose, separate milling is needed. For the milling, it's different from the coal milling because the coal mills are not suitable for such a large volume of biomass milling. So the separate biomass milling is there, and all the milling is again stored like a dedicated biomass stored in a silo, and then that is passed through a dedicated biomass burner, and the coal milling, which is the usual thermal power plant, and it goes to the coal. So the layer of the burner is introduced within the same furnace. So there is some kind of a modification that we need to do it to accommodate this dedicated biomass burner in terms of the power generation requirement. This dedicated biomass firing, which is common, which is being currently used here, that is what happens is we completely take out all the coal milling and coal burner, but instead of that, it will be the 100% biomass milling and then 100% biomass burner, which is being used here in currently one plant is working in the UK. When you are considering this co-firing options, what are the factors that you need to consider is, suppose if you're using in retrofitting of the existing power plant where the plant is already on the line and you need to use them, then you have to consider these factors: retrofitting existing plant and new plants. The retrofitting existing plant is cheaper, limited co-firing, and quick turnaround for the modifications, where you can have a kind of plant which is coming into that very quickly. You need to carry out the biomass characterization, which is a critical part, because most of the time when you're using the biomass, whatever you're testing it at the time of your utilization, that will be different from what you're actually using it at site. So you need to have a various biomass collections, and then either you have to analyze all the biomass and their ingredients, what they contain, and then you need to appropriately use the technology and the combustion systems to cover this. Say for example, for this biomass characterization, and I did my masters, IIT Delhi Energy Division, they published some biomass characteristics, and still it is available. And if you want, you can get those books, and it was actually published with the help of, I think, Ministry of that time, non-fossil fuel and renewable energy, MNRE they call it as, and they published that publication, and still it is quite useful
which covers all the biomass which are available in the India, and what are the characteristics of each biomass, physical and chemical, and all sort of information that is there. And even such kind of document was not I have not seen in the UK. So a lot of developments have been done in the last 20 years on the biomass utilization, and then how to use the pellets and how to use them from torrefied to non-torrefied fuels and sort of things. So loads of developments have gone in India for this area, but not much pickup of the biomass is being done. Modification of the heat transfer material is also envisaged. Say, for example, like what SAMARTH mission deputy director he mentioned in his speech just before me, like there are some chlorine concerns and there are some other chemical impurities which causes the burning and affects the heat transfer surfaces. So those kind of things, you need to be selective on modification of the heat transfer materials. Say, for example, if it is having more chlorine content and all, use high alloy steels or internal kind of a components rather than using stainless steels, because stainless steels may be prone for chlorine and associated issues. So you need to select which material based on the biomass you're consuming, and then you need to adapt the surfaces to these materials so that the plant can withstand a longer period than what you expect. And the change of burners also needed, because when you're selecting for the coal, you have selected with the coal characteristics, but that is not suitable for the new biomass. So that needs to be changed, and it will be suitable for the biomass and the range of the biomass that is being used in your plant. Similarly, there are some modifications that are needed for the feeding systems, and there will be some tuning needed for control and instrumentation. The ash characteristics are also different for biomass and coal, so you need to have a proper ash disposal and collection systems suitable for the change in the ash conditions. And there are some environmental cases where the NOx and SOx and other things that can occur, and you need to address all those things in your retrofitting actions. And since it is a retrofitting plant, you might not have the luxury of changing the layout, because most of the plants are already being built and you wanted to make use of the available components, and that will be quite useful for your purposes. So you need to be suitable for whatever the layout which are there, and you need to accommodate. That's a little bit of a challenging task when it comes for the retrofit decisions. With the new plant, you don't have any issues of whatever I have explained. You need everything is simpler, where you can have a proper biomass storage, and you can fill all the environmental standard requirements, and you can have proper ash disposals. And the only thing you need to see is the long-term availability of biomass, because sometimes the biomass availability can be an issue, because it may be available on certain seasons, and certain seasons it may not be available. So you need to execute the long-term contract, and that will be the main key for the biomass. And there are some issues, and what are the remedies that we have addressed is basically biomass sourcing. As I mentioned in my previous slide, that may be an issue. You need to have a proper sourcing mechanisms or ensuring the biomass and the characteristics that matches with your plant. And the availability, if it is available, but is it easy to transport or not easy to transport? That's another issue. Sometimes you need to take the fuel from the source, which may be
hundreds of kilometers away, and the transportation cost for taking out that biomass source may be very high, and that will be affecting your project as well. And based on this, you need to see the economical and financial efficiency of the plant about when you're converting into the biomass co-firing. And within the plant, like which I did most of the thing, what we have done is we collect the biomass and make the fuel characteristics, develop the nature of the fuel in terms of physical and chemical characteristics, check with the existing layouts and plant equipments, and check the suitability of that fuel characteristics for the thermal and mechanical aspects of the boiler, the heat generations, heat pickup, and all sort of thing. And then what components needs to be replaced and what can be used without much replacement. All those things have been verified and checked as a kind of a feed study, and then we put that, and again we'll go for front-end engineering. After that, we go for the detailed design and check whether that project is economical and financial efficiency achieved, so that that can be further moved for the actual design stage. And so when you're converting this biomass co-firing plant, the basic list is like you have to do some due diligence, where you're getting the source, what is the kind of a contract, whether it's a short term or long term, and how do you ensure that the characteristics are being matched, and all sort of the fuel associated diligence you need to carry out. And applications, when you are doing it with the existing plant, what are the things that you need to carry on, and you need to carry out about the hazards, operability and hazard identification studies, so that when you're using the biomass, how it is impacting in terms of the safety of the people, safety of the plant, and safety of the component, and all sort of things, so that safety of the environment as well, so that you need to carry out and identify and mitigate any issues which you have identified in this, and as low as possible in terms of any hazardous situations. And you need to check the layout. You need to introduce the biomass storage. You need to have the new pathway for bringing the biomass to the site, developing and delivering and storing, and then going for the milling. And after the milling, you need to have some storage, and then it will be passed through the different burner arrangements. So you need to have a proper asset management on this. What are the new assets? What are the old assets that can be reused? What are the assets that can be modified? And all sort of things. So those kind of capabilities in the engineering you need to develop. And also you need to have a troubleshooting support when there's an issue when it comes for the power generation. And when we are using the biomass, I mean, in the UK, since we have not having only the dedicated biomass firing, and for the fuels which are coming from the waste, then we characterize both, and then we try to use them as much as practical. And I consider this slide like biomass-based fuel. One is the biomass. When you're going for biomass, you can have combustion, pyrolysis, gasification, and biogas anaerobic digestion. Those kind of areas you can use the biomass. And in the waste, you can use combustion. Instead of pyrolysis, you can go for incineration, gasification, and the remaining waste which you can't do anything further, that will go as a landfill. And even for some of the waste which can be biogas generation as well. So when you're co-firing biomass with other fuels, it can be like chips and logs and pellets, pulverized, all sort of things you can use. And when you're working with the
coal-fired plant, most of the coal-fired plant in India are pulverized fuel based, and some of them are not pulverized, but it can be used with the chips and pellets. And all you need is you have to match the existing burner arrangements and the combustion arrangement. So you may collect in terms of the chips or anything, but you need to make the pulverization suitable for the conversion, and then it will be there. In this picture, you can see there are some, biomass coming, and then it will be carried over and put it into the storage, and then that storage will be used for, again, milling and other purposes. I work few projects. I worked on some of the project, which is one is called Fiddler's Ferry, where we have 20%, and another ferry bridge we have 20% co-firing. I worked for Drax, which is 100% biomass conversion. I worked for some studies on Longanet and Abetta power stations in the UK, and Radcliffe power stations as well. But those plants are now closed. Even though it is closed, I just wanted to give some glimpse of how this is being done in this ferry bridge. This is the boiler, and this is the furnace. In the existing furnace, if you see here, there is a burner box where it's a tangential and firing arrangement, so that the burners are located across tangentially, and then the pulverized fuel pipes are passing it and taking to the burner box, and the number of burners are arranged, and these burners are used for combusting the pulverized coal, and that is oppositely or tangentially firing, so that the box is there. You will have a tangential firing within this, so that the fireball is within the furnace, and the heat which is taken from the furnace is either by the radiation and heat transfer, it passes through the superheater stages, and these are the different kind of stages which is there, and this the furnace knows where the flue gas which is generated from this combustion passes through there, and it goes all the way to different heat transfer surfaces, comes down in the first pass, and then it goes to the second pass with the economizer, and then with the economizer it goes to the air heater, and then with the air heater it finally goes to the electrostatic precipitator, and then it goes to the stack. So the flue gas generated from the combustion follows this pattern. The steam process is similar, like you pick up with the steam from economizer and evaporator, and then it goes to reheater and superheater stages, and then the respective piping is interconnected with the help of drum, and where the superheated steam is separated and comes back and further heated up, and then it will be going to a turbine for power generation purposes. When you are going for this, co-firing, there are some issues when we introduce the biomass. So what we have done is we have going for the coal burner in the bottom, and we have some secondary air injection, gas recirculation, and oil burner, which is for the starter. And then we arrange it in such a way that we introduce some biomass plant burner almost in the top level, so that because when we are releasing the biomass instantaneously combusts, so it releases the heat instantaneously. It doesn't need to be introduced at the later, so that the more effective heat pickup can be done if it is introduced at the higher levels of the furnace, so that it is optimized for the power generation and efficiency of the combustion and all sort of thing. And if you can see here, the coal 1, 2, 3, 4 coal burners, and we have one biomass burner, and each roughly provides about 20% of the overall load, so that the biomass is also providing the 20% of that.
that kind of thing. And oil burner is only for the starter, but that will be retracted later when it is not in use. And the air also is optimized in such a way you need to provide some secondary air for combustion, and you need to provide there are some characteristics which causes the NOx because of the very high release of the heat. And since the biomass is burning instantaneously, you may have a separated overfire air. We call it as SOFA, or we have another kind of arrangements called ROFA, rear overfire air, so that you can locate the overfire at a different elevations, so that it works as a staged combustion, and in turn it will control the release of SOx and NOx, mostly NOx, because that will be very useful for the environmental purposes. We have a clear set lines for the environmental, which is being followed with the European Union's emission regulations. Initially, it was called Large Plant Combustion Directive, LCPD, but later it has been changed Industrial Emissions Directive, IED. Since 2010, it was the common emission status used, and in 2024 it is being recently upgraded with the new emission limits, and those things are being compulsorily being followed in our design conditions. If you're talking about the biomass handling, this is the situation where you can collect the biomass either through trucks or tram or whatever it is, and comes there, goes for the biomass silo, use the conveyors, use separators and disc screeners, then go for some grinder or the milling, and then it will be used there as a separator, and then that will be going as a silo for the storage, and then that will be used for biomass injection. And in the UK, most of the plants now, even though none of them are existing, most of the plants have been converted to the biomass, and these are the plants which are being converted based on the old systems. So if you see here, all the plants which are having all the units, some of them have been converted into biomass. And in the UK, again, we converted to 100% biomass, and all the biomass which are being generated, mostly being collected, like I've shown you some pictures here. In the household, every household is provided this kind of a small biomass bag, and it needs to be filled with a biomass or residual waste from the vegetables and other things, and it needs to be collected, and that will be passed on. And even for these houses with the larger kind of thing, every house, if it is having any lawn or something, all the agricultural waste will go into this green bins, and then it will be collected. The truck will come to the house, collect on specific weekly once or something, then they collect and they take it away, this biomass, but then they will be using it for different biomass utilization purposes. So here I put the the link for the Drax video. I'm not showing that how it is being done, but if you have some time, you can have checking it on. For the biomass, since the biomass, as I mentioned, it is remember, it is a 4,000 megawatt unit, and they don't have the biomass. So what the Drax has done is they have agreed, made a long-term agreements with some of the manufacturers in Canada and America and Brazil and all sorts of places, and they develop the biomass, converted into pellets, and these pellets are transported by sea, come to the nearest seaport in the UK, and from that seaport, these trains are collecting this, and then it comes here. So every day you can see this biomass collection trains that will be collecting, and then the goods vehicles and passing it to the plant. In order to get the government, this biomass, without the government support, it cannot be done. So what the government has done is they have
done some direct supports and they've done some indirect support. And some of the direct supports are they provide some initial demonstration plans. They have spent on R&D, working on various projects and how this reacts, and then they come up with the commercial situations. And another important thing is this is the landfill levy. What they have done is, like, if you are collecting the waste, agricultural waste or other things from the home, and if it is filled it in the landfill, they charge about 85 pounds per ton of the fuel, the demands dumping. So the plants which are forced for using that fuel as a fuel, so that they will be saving that landfill levy. So the government is directly putting these kind of conditions, whereas the indirect one, if you're putting the plant, they provide renewable obligation certificates, and those renewable obligation certificates are initially how much you're using the biomass. Based on that, you'll be given additional money and you'll be given additional funding for implementations and all. And that has been closed after some time, and then it went for contract for difference. Like if you're planting, if you're going for conversion of the plant, or if you're buying the plant, how it is different, how much cost is difference from coal plants to biomass plants, and whatever that difference, and that difference will be provided by the government, so that they are encouraging the biomass plant. And whatever that you are generating from the biomass, because it's renewable friendly and carbon neutral, so for that purpose they are giving some feed-in tariff, so that you are getting more money than normal conventional plant. So these are the kind of supports which are there. And if you see here, some of the documents which are there now, the Department of Energy has been changed to different names, but the fundamental processes are same. And these are the frameworks which they have provided with in those days, like renewable obligations. What are that they have covered? And if you can see, they've increased the adjustments over the period, so that they are providing more money for the plants to put it in, and that will encourage the people for more or less going for utilization of the biomass. And the results, like it was started in 2015, and the results you can see now, we are nearly about 40 to 50% of the fuel is actually renewable, and considerably it has been reduced from the dependence of the fossil fuel, and there's no coal which is being burnt in the UK. So in the future, like 2050, it is expected that all the power plants will be renewable with that. Okay, and so applications which I have already discussed about this: gasification, pyrolysis, anaerobic. And I know most of the audiences are well aware about these projects and the different types of conventions. But if you have any further questions, please contact me. I can be happy to answer it. And this is the DRAX, and this is the silos where they are being collected and put in. It's a dedicated, that means fully 100% biomass. But in the UK, it is there. This is the only one which is working at the moment. Whereas for the India, it is for the co-firing, which is the needed. So I didn't really cover more or touching about this particular slide. I just give you only for the glimpse. Okay. And if you can see, these are their different levels of their sales and power generations and all sort of thing. These data are latest available, and you can get it from their site. And when you are going for captive power plants, which are slightly different from the conventional large coal-fired plants, you can have a biomass and waste. This is a kind of a traveling grade arrangement where you can have your waste comes there, deliver it in, and that will be used with the feed cranes, and take the feed cranes, put the fuel in, and use the combustion. With the combustion, you generate the steam, and then the steam will be used for steam generation, and then you use it with different filter mechanisms, back filters, and all sort of thing. Remove the flue gas emission,
passing it out, and then it will go away. And the bottom ash, which is being collected, mostly this is a biomass, so this is can be used for kind of agricultural residual and topping of soils and other improvements. So it can be well used, and so that it can be collected and that can be recycled without any issues. And in a plant, if you see here, this is one of the plant where I have visited in the past, and I have also worked with Babcock Wilcox on some of the plants using the waste as the fuel. So in that one, these are the arrangements you can see here. The vehicle will come and it passes in different levels. It comes from the bottom, collects and goes there and deposits. Then they go, and from there, this is a crane where the cranes are arranged automatically to pick up that and mixing it up and using it on, goes to this fuel. And then this is the boiler arrangements and different levels, and then the steam will be taken away and the plant will be somewhere in the adjacent there. Behind this, the steam is being used for generation, and then the heating and other systems will be working on, and then it will be, and everything will be a enclosure, so that the plant, if you're going to the site, you may not be able to see any order or anything because of its arrangement. Another thing is anaerobic digestion, but you know that I'm not covering here because we mostly talk about the co-firing. The last bit, not the least, is the recommendations. What I find is, like, most of the the cost-effective mechanisms to be used, and in India, it's the nature that we are already using the biomass as the domestic fuel for cooking and other purposes. So we don't really not using such kind of fuels in a large collective basis. But at the same time, some of the agricultural mass burnings and all are reported at every now and then, especially in the Delhi region, where it causes the pollutions and other aspects. So those kind of biomass, we can have the resourcing, and that can be used in the power plants, well effective. And the SAMARTH mission actually encourages such kind of things to provide